करथिले। ओके अनिमा करो कि बोधे फर्स्ट टाइम पे आज जॉइन करछंती क्लास रे? नो हेलो हेलो हाँ आपण आज फर्स्ट टाइम जॉइन करछंती? स्टार्टिंग हो करछि जॉइन 4 दिन ला चला माने लास्ट 4टा क्लास करिसंती बोधे कहउछंती? हाँ सब जो स्टार्टिंग रु करछि। अच्छा पढुचंती किछि जहा जहा पढा होछि क्लास रे? हाँ लास्ट क्लास रे हम कोन डिस्कशन करिथिले? लास्ट क्लास रे हम टॉपिक कोन थिला? कोन लास्ट क्लास में कोन डिस्कशन करथिले? किछि मने नै? नहीं ना श्रुति मैम किछि मने अछि लास्ट क्लास रे कोन हम डिस्कशन करथिले? यस मैम न्यूट्रिशनल फैक्टर पल्सेस सब फूड विषय फूड डायरी प्रोडक्ट सब कराइथिला। Selection of the different groups of the fruits like the bodybuilding group Yes. foods and Bodybuilding. protective regulatory and that energy giving food. Specifically, Yes. I already discussed about the carbohydrate, protein, fats and other minerals also. Yes, Okay. Today I will start from the food safety. Okay. Okay, ma'am. आरंभ करदेबा और लेट करबानी बिकॉज़ हमर जति कि मते आज सब सारिया पे पडिबो अब ए माने ए यूनिट रो जोटा आपनकर फर्स्ट यूनिट दिया हितिला जोटा आपनकर डीएनएच पेपर 1 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी तो सेही न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी रो टुडे इज द लास्ट क्लास सो हम लेट करबानी आरंभ करिबा टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द फूड सेफ्टी व्हाट डू यू मीन बाय फूड सेफ्टी फूड सेफ्टी कहले हम कोन बुझिबा हेल्दी फूड फूड को हमें केमती सेफली हमें ताको स्टोर करके रखिबा फूड सेफ्टी आई थिंक कौन कहले आउथरे कोन तो सुना जाउनी बड़ पाटे कोन तो सेफली हम केमते स्टोर करके रखिबा फूड सेफ्टी कोडा को फूड सब हम जो फूड सब खाउ छी ताको माने हाइजीनिक करी केमती रखिबा वेरी गुड एग्जांपल जेमती कि वेजिटेबल्स हो फ्रूट्स हो हमें मार्केट रो आणला परे हमें ताको केमती केयरफुली वॉश करी करी ताको हमें खाइबा पिला मानन को दबा ई सब जिंसा किंतु से मैम सेटा इंस्टेंट हवा दरकार जोटा कि इंस्टेंट आनिकरी इंस्टेंट यूज करिवो माने सेटा होची फ्रीज रे फळ गुडा को फ्रीज रे स्टोरेज ता कम रहइबो वेजिटेबल हो फळ हो मु ऑलरेडी लास्ट क्लास रे कहि देछि हमर जो न्यूट्रिशन रही छी किछि तो हमर रही छी पेरिसेबल फूड नॉन पेरिसेबल फूड तो जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड्स अछि तो हमें सेइतरे सब जिंस को तो हमें आनी कि एट ए टाइम हमें मो ता पूर्वर भी पढै छी ना माने फूड बजट हमें आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फूड बजट आल्सो माने अछि किछि सेइतरे हमें कोन करबा एमटी ए करबा कि माने जहा जेते बेले आनिबा एंड सेते बेले एट ए टाइम सब जक जिंस यूज करबा नो मैम तो किछि डिपेंड करे जेमति आपनकर डेयरी प्रोडक्ट हो किबा अदर किछि पेरिसेबल फूड्स अछि जोटा कि आपनकर शीघ्र ही नष्ट होई जिवो तो सेही भलिया फूड एटलीस्ट आपनकर 24 आवर्स रहइबो या मैक्स टू मैक्स सेटा 48 आवर्स पर्यंत सेटा तार लाइफ स्पैन माने ये करबो बट हमें सेही भलिया जिंस को हम जते शीघ्र परिबा ताको यूटिलाइज करबा बट सब जक जिंस को तो हम सेमति न बने ना जेमति जदि हम पल्सेस कथा चिंता करबा प्लांट रो जो other plant sources of protein is also there and other किछि जिंस अछि जोतरि कि हम किछि हम सेथरे ऐड करी कि प्रिजर्वेशन करी कि फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम जोटा कि फूड बजेट में आपण मान को कहले जेमति कि हमें सीजनल एंड रीजनल वेजिटेबल्स को बहुत दिन पर्यंत स्टोर करी केमति हम प्रिजर्वेटिव करी कि हमें रखी परिबा माने अछि तो किछि तो सेथरे हमें कोन ए करबे कि जहां आनिबा एट टाइम हमें ताको कोन माने शेष कर दबा एटा नो मैम ताले कोन कोन फूड सेफ्टी कहले हम कोन बुझिबा फूड सेफ्टी माने फूड रो यूजेस जो करिबा in specifically in the food na food specifically contamination is there food that is called as the food
contamination. Okay, that contamination may be the chemical contaminant, otherwise it may be the contaminated by the any kind of microorganism is also there. That microorganism is mainly responsible for the contamination of the food particles. Okay, and in this topic also I will discuss about the food adulteration. Okay, food adulteration means common adulterant is used for the adulteration of the food and their health hazards. जदि आमे किछि adulterate करूछंती food रे then केमिति से हमर health रे कोन कोन hazard करूछि and a simple test to detect the adulteration. आमे सेति पई बोली हमर साइंस बहुत डेवलप करछि, बहुत सारा adulteration को हमें प्रिवेंट करिया पई रोकिया पई बोली गवर्नमेंट रे बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन इज आल्सो देयर. तो आमे सेटा को यूटिलाइज करिकि आमे केमिति आमे adulteration को आमे टेस्टिंग माध्यम रे किछि मात्रा रे आमे ताको प्रिवेंट करी परिबा या ठीक जिंसटा हमें केमती पाई परिबा. And consumer protection law is also there, that is called as the food laws, and food standard certification and quality control is also there, and agency involved in the consumer protection. All these things I will discuss in this food safety. Okay, जानी हला फूड सेफ्टी कोन हमर स्पेसिफिकली जो फूड कंटामिनेशन होची स्पेसिफिकली दीटा जिंस रो ही फूड कंटामिनेशन हेताय दैट मे बी द केमिकल कंटामिनेट अदरवाइज दैट मे बी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन रे आपण मानकर समस्त प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर जोडा को थाए जेमति कि स्पेसिफिकली फूड कंटामिनेशन रीजन कोन फूड कैन गेट कंटामिनेटेड बाय द वाटर यूज्ड फॉर द वॉशिंग और द cooking, and main specifically by the soil in which it is grow, also by the container used for the storage or preparation and the serving, and by the personal handling the foods at the various stages also, particularly at the stage of the dishing it out and serving. And the food contamination mainly of two types. One is the, I already told you that the chemical contaminant, and the other one is the microorganism contamination. These are two types of contamination, and mainly specifically the chemical contamination means with the help of the different types of chemicals food is easily contaminated. Okay, and what is that? First I will discuss about the what is in generally in the food particles we are using the different types of pesticides, insecticides, and these substances can be called as the contaminant, and that contaminant pesticides are an example of such toxic chemicals, and that is mainly responsible for the contamination of the food particles. And specifically one and more of the pesticides get accumulated in our body due to their presence of such foods. Such a accumulation can cause the different types of abnormality in the functioning of our vital organs and body systems, such as the mainly it affect due to the contamination of the food particles. Mainly it contaminated to the our different system, like specifically sometimes when the food is contaminated, primarily our nervous system will be affected. Not only our nervous system will be affected, along with the nervous system also other system may be affected, and specifically our GI system, gastrointestinal system and circulatory system, and in also kidney is also mainly responsible for the contamination of any kind of due to the contamination kidney is may be affected. Okay, because देखो आपण माने जहां भी खाउचंती जहां भी हमें नोचन फास्ट थ्रू द ओरल पाथवे दे कि आपण कर से जाउची जीआई ट्रैक्ट को. वंस जीआई ट्रैक्ट को पास कला परे से सब तक हमर ब्लड सर्कुलेशन रे मिसुची, एंड जेतो ब्लड सर्कुलेशन से पहुंची फाइनली इट रीचेस टू द नर्वस सिस्टम, एंड जेते बळे भी जीआई ट्रैक्ट को जाउची तापर फिल्ट्रेशन हला परे से किडनी दे कि छाणी कि बाहर को जाउची. तो एई सब ओडा को तार पाथवे जोटा कि से अफेक्टेड करची ड्यू टू द फूड contamination. Okay, तो एटा होची आपनकर contamination, and sometimes कोन होची ना poisons like the lead हो किबा cadmium हो can enter the food through the improper coated utensil. आमाने जेतबेल देखिथिबे आपण माने हम जेतबेल कुछि गोटे मार्केट रो हम किछि किणी की आनुचंती तो फूड को से माने कोन करचंती गोटे रैप करके हमको देखंतो हमनको भितरे कोन अछि दैट इज नॉट इंपोर्टेंट, बट माने सुपरफिशियली से केमिति से ताको माने कोटेड करके केते सुंदर से हम आई कैचिंग केते हेई पारि छै, आई अपीलिंग केते हेई पारि छै. तो सेई बडिया फूड ता भितर हमर साइकोलॉजी से भितर निहातिर भलो जिंस थिबो.
जेमती कि जनरली आमे केबे मध्य भीतर जिनसटाको आमे केबे काहर स्टडी करि नथे आमे सब पहिले सुपरफिशियली ऊपरटा केते कलरफुल हेची ऊपरटा केते सुंदर हेची त सेही सुंदरता पई बोली आपण देखिथिबे एनी फूड पार्टिकल्स जेतोळे आपण मार्केट रू किणी के आनछि त कोटे अति सुंदर से राब हेकी से आपण को देई थाए तो जो राब हेतै सेटा मेनली आपण को लेड पेपर हो किबा कैडमियम पेपर हो सेबडा को सब यूज हेतै एंड से पेपर डा को मेनली it enters the food through the coated utensil, and these poisons can also call the industrial contaminants of the food, and this is because factories and industries release many of these chemicals into the rivers and lakes also as a part of their waste, and say waste को आने की आमे कौन करचंती आमे फूड रो ऊपर कोटिंग करी कि आमे जितला रैप करी कि आमे सेटा को आने की अजे हमरो खाद्य हिसाब रे ता भीतर हमरो गोटे गरम जिंस रहउची एंड सेही गरम जिंस ताकू से माने ऑब्जर्व करछ आमे ताको आने की आम जीआई ट्रैक्ट भीतर को भर्ती करचंती तो इट विल दिन नहीं 2 दिन नहीं 5 दिन नहीं 10 दिन नहीं दिन ना दिन से कौन कर जितला बहुत दिन हमर कंज्यूम करला पर से फाइनली इट इंपैक्ट अपॉन आवर it exerted the negative pressure upon our kidney and say taha phalare madhya ajikali apan mane dekhuthibe je CKD last both classes I already discussed about this जे CKD जो 1 to ESRD स्टेज पर्यंत जो अपन माने कर जाउची एटा होची तर मुख्य कारण एंड कंटामिनेंट होची दैट मे बी कैडमियम हे पारे लीड हे पारे मर्क्यूरी हे पारे किंबा आपनकर PCBS हे पारे पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स ए सब ओडा होची मेनली कंटामिनेंट जोथि पई कि आपनकर एटा मेनली फूड रे इन्वॉल्व हे के आसुची एंड एथि पई ही आपनकर जत्ते प्रकार हेल्थ इफेक्ट आपनकर डिसऑर्डर होची जेमति कि जदि हमें लेड नउचंती लेड मे बी एटा पानी रे भी हमें आसी पारे हम देह को जेमति कि हमें जोटी टैप वाटर यूज करचंती बेले बेले देखिथिबे को जेतेबेले आपनको कोनसी कारण बसत पानी रो कंटामिनेशन रे आपनको लेड भी आसी पारे एंड लिवर एंड किडनी ऑफ द एनिमल्स आल्सो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम द orchards treated with the pesticides, lead, arsenate, or from the places close to the roads with the heavy traffic, canned food, especially acidic food, can mix, and the milk product also a lead द्वारा contaminate हे थाई पारे, and that causes the different types of health effect mainly due to the lead poisoning ना हमरो main complication हबो nausea हे पारे किबा sleeplessness हे पारे it may causes the constipation fatigue abdominal pain anemia abortion also सेत में आपण माने देखिथिबे जो मानकर थ्रेटेन्ड अबॉर्शन थाए से मानको डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना करथांती स्पेसिफिकली जो मानकर आपण मानकर जो आईवीएफ करिथांती ना बहुत किबा कोनसी प्रकार यूटेराइन कैविटी रो वीक थाए मसल्स गुडा को बारी वीक ते से मानको देखिथिबे डेंजरस प्रेगनेंसी केस रे टोटली अपन को प्रोहिबिट करा हैतिबो जे बाहर फूड को पेशेंट को बिल्कुल अलाउ करि नथि बिकॉज़ ड्यू टू दिस लेड कंटेंट जदि अपन को इधर वाटर रे आसी पारे किबा अपन को कोनसी फूड रे आसी पारे किबा अपन को डिफरेंट सोर्सेस लाइक मिल्क रे मध्ये आसी पारे अपन माने मार्केट रे जो पाउछन मिल्क सेही मिल्क रे मध्ये कंटामिनेट हे के आसी पारे एंड इट मे कॉजेस द अबॉर्शन एति पई बोले आमे एटा को मध्ये निहाती रूपे एंड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ दिस लेड माने लेड कंटामिनेट हेले एटा मध्ये अपन को kidney एवं brain paralysis हबार मध्ये chances थाए and convulsion and also it causes the mental disorder and the permanent retardation in the children and जो मानकर mentally retardation हेई थांती ना पिला माने जो मान देखिथिबे जो माने both parents mother and father both are working ना सेही केस रे कोन हेता हम स्पेसिफिकली सब बेले हमें ट्राई करनती बाहर खाद्य पिला को दे देबा दरसे आ ताको स्कूल छाड़ देबा देन आमे भी हम ड्यूटी रे बाहर की पळेबा बट दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड से माने देखिथिबे जो माने both father and mother both are working ना सेही केस रे आपण माने देखिबे से मानकर मैक्सिमम माने हमर हॉस्पिटल को या मो प्रैक्टिस फील्ड भीतर मु देखि से मानकर मैक्सिमम केस आसंती मेंटल रिटार्डेशन हेकी तो ए सब जिंस को मध्ये हम निहाती रूप फोकस करबा दरकार केमती हम लेड कंटामिनेट को हम अवॉइड करि परिबा एंड cadmium is also the one type of contaminant and it may be cadmium contamination हेले it may be जति कि हमर aquatic plant रहिछि सेटा को से मेनली माने contaminate करे and shellfish को मध्ये and sometimes जो माने फर्टिलाइजर हो किबा जो आपण माने जो माने सिगरेट स्मोकर से मानकर मध्ये ए कैडमियम कंटामिनेट हेबार चांसेस अछि एंड जदि कैडमियम कंटामिनेट होछि इट कैन कॉजेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इफेक्ट लाइक द जदि एटार अफेक्टेड हेला परे इट मे बी कॉजेस द किडनी स्टोन आल्सो एंड इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम एंड अमीनो एसिड्स फ्रॉम द प्रोटीन ए जदि हमर
यूरिन रे आपनकर जदी ए कैडमियम रो कंटामिनेट हे कि किछि खाद्य हम नउचंती ताहले सी मध्ये आपनकर कैल्शियम रे प्रोटीन्स गुडा को एंड कैल्शियम गुडा को लॉस हे जिवो जहा पर जाको कैल्शियम ऑक्सैलेट बोली कुहा जाय एवं सेहिति पई बोली आपन निहाती रूपे जो जो जिंस कैडमियम कंटामिनेट करोछि सेही सब फूड को नेला को टिके चिंता करिके नबा निहाती दरकार एंड यूरिनरी किडनी डैमेज आल्सो मल्टीपल फ्रैक्चर होबार मध्ये चांसेस अछि मींस आपन माने देखिथिबे आमने टिके हाइट रु पड़ले या मार्बल घरे टिके भी गोड़ा खसी गेल आपन संगे संगे फ्रैक्चर हो छै एंड इट टेक्स टाइम माने 6 मंथ 1 ईयर ए पर्यंत मध्ये आपन प्रॉपर्ली बोन रो ओसिफिकेशन हेई पारुनी बोन रो माने मिनरलाइजेशन हे कि प्रॉपर्ली तारो फ्यूजन हेई पारुनी बुझिला तो एई सब जिंस को कैडमियम रु केमते हमें कंटामिनेट रु केमते दूरे रे सेटा को भी देखिया पड़े एंड मर्क्यूरी इज आल्सो द वन ऑफ द कंटामिनेट एजेंट एंड मेनली मर्क्यूरी कंटामिनेट करे mainly freshwater fish from the polluted waters and seeds treated with the mercury especially plants and foodstuff in some cases of the jo ame jo khauchanti milk from the cattle grazing on the contaminated plant also jodi mercury infection rochi then it also causes the different types of health effects specifically it causes the severe abdominal pains is there nausea vomiting diarrhea and diarrhea dysentery is also there and also some nervous disorder madhya se kare thai specifically mental and emotional disturbances madhya kare due to the mercury contamination and loss of concentration memory generally weakness and tremors in the extremities of the limbs loss of the vision hearing paralysis and esabu hochi complication hue due to the mercury contaminant and the last one is our pcb is the polychlorinated बाइफिनाइल्स एटा जेतेबेला हमर स्पेसिफिकली आपण माने हम जो प्रत्येक दिन खाद्य रे जो नउचंदे सबोडा प्रोटीन सोर्सेस ओडा का लाइक हमनकर मीट हो एग हो किबा पोल्ट्री हो किबा मिल्क हो किबा एनी डेयरी प्रोडक्ट एंड प्रोसेस्ड एंड द पैकेज्ड फूड हम स्पेसिफिकली हम देखिथिबे जूस ता घरे आनी कि बने कि हम पिल्ला को दवा माने हम पाखरे ना टाइम अछि ना हम पाखरे पेशेंस भी अछि दीटा कर घोर अभाव तो मैंने कौन करती आम स्पेसिफिकली हम कैन फूड या आपण मानकर प्रोसेस्ड किछि हे बना चुना वाला हेतिबा वाला जूसेस को स्पेसिफिकली हम पिला मन को या घरे आसबा गेस्ट मन को देपे प्रिफर करते बट इट कॉजेस द सीरियस हेल्थ इफेक्ट लाइक द आई जो माने आई इन्फेक्शन है कि आई डिस्चार्ज होबार भी माने लैक्रिमेशन है कि डिस्चार्ज होबार भी संभावना अछि एंड आई इन्फ्लेमेशन सीवियर स्किन प्रॉब्लम आल्सो हेयर लॉस एंड द रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम in some cases it causes the infertility also and liver tumors liver damage may causes the cancer also male sterility kono male sterility what do you mean by male sterility स्वरूपा सर कहंतु स्वरूपा पंडा Okay. Stability na व्हाट डू मीन बाय स्टेबिलिटी आपण मानको मु जहा जहा कहि जाउची मते आज माने कोर्स को सारी बार अछि आपण माने जति किछि न पछिजन त सेठु मते ब्रेक कोन नाहंती काहे कि मु इते चलै छी आपण खाली सुनुथि बेने कोन माने मैडम मेल सेमन जोटा सेटा मेल सेटा न चेंज हेबाडा स्टेबिलिटी को आवे कोन कहले मैडम गोटे पोजीशन रे रहिबो चेंज होबनी सेटा स्टेबिलिटी को आवे I'm not asking about the stability. I'm asking about the sterility. Ma'am, Yes, sterility madam. Sterility means the man who doesn't produce offspring. Who does not produce? Semen madam. Male semen ta secretion जो हबन सेटा male sterility. Very good. एटा होची एक्चुअली समानकर फर्टिलिटी रेट बहुत कमी जाए बुझी पाले जो मानकर एजोस्पर्मिया थाए एजोस्पर्मिया द टर्म इज इन द मेडिकल टर्म ऑफ दैट वन इज द एजोस्पर्मिया means absence of what sperm that is called as the एजोस्पर्मिया इन दैट केसेस ना आगु को जाय कि से मे बी मेल स्टेरिलिटी होबार संभावना थाय तो ए मेल स्टेरिलिटी रो मुख्य रीजन होची आपण मानकर पीसीबी रो कंटामिनेट जदी होची से मेल स्टेरिलिटी होबार बंद संभावना रहिची तो हमें स्पेसिफिकली जदी आई लिवर एंड अदर लिवर को मध्ये पूरा डैमेज करि पारे ड्यू टू द कंटामिनेशन ऑफ दिस पीसीबी तो एई सब जिंस को लेड बा पीसीबी हो किबा आपनकर मर्क्यूरी हो केमती हमें ताको अवॉइड करी कि रहबा सेटा आपनको डेली डाइट लाइफस्टाइल रे अपन निजे को भी चेंज करिया को पड़िबो मैम एक्सक्यूज मी मैम
गुड इवनिंग मैम एक्चुअली हम टिके लेट में हाँ लेट रे टिके जॉइन कली तो मैम एटा को चारटा पाउ टिके कोंतु मो बुक आज रो डिस्कशन करछि फूड सेफ्टी को लेके, फूड एडल्टरेशन, फूड कंटामिनेशन को लेके। ओके ओके हैला? थैंक यू मैम ओके। एति पर्यंत बुझियला ना जा हम कहले? मिलन सर Yes, ma'am. बुझियला? Yes, ma'am. Yes, हाँ मैडम बुझेला। ओके ओके थैंक यू। आमे तो आगो को जीवा आ समय आज बिल्कुल मु गोटे मिनिट भी एपट सेपट डिस्कशन करिबिनी बिकॉज़ मो पास समय बहुत कम हो विद इन द टाइम भीतर मु कोर्स को सिलेबस को कंप्लीट करिवार अछि। ओके Okay, ma'am. ओके ओके मैडम। एंड मु तो एटा आपण मन को कहितली कंटामिनेंट लागे केमती कंटामिनेशन कंटामिनेंट डिफरेंट कंटामिनेंट माने कंटामिनेशन जो होची फूड्स मेनली दुई प्रकार दुईटा जिंस पय गोटे कहितली आपण को कंटामिनेंट पय एंड द अनदर वन इज योर व्हाट माइक्रो organism. In some cases different types of microorganism is there and that microorganism is mainly responsible for the what contaminant of our food particles. Specifically आपण माने देखिथिबे साल्मोनेला टाइफी हो किबा बहुत सारा माइक्रोबैक्टीरियम पॉजिटिव माइक्रोबैक्टीरिया नेगेटिव अछि जोडा कि आपनकर फूड कंटामिनेशन पे हेल्पफुल हेइतै and that is called as the microbial infection and that is mainly caused by the due to the infection of the different types of microorganism. Okay, तो सेही विषय में पढिबा that is the contamination by the microorganism. Mainly certain microorganism contaminate food and causes the diseases in individual who consume the food. The cause food poisoning mainly caused by the due to the infection by the microorganism and mainly the harmful effect of consuming food contaminated by the microorganism. And this food poisoning is mainly classified into two categories. One is your food infection and another one is your food intoxication. This food contamination is mainly divided into two types. One is your food infection and the another one is your food intoxication. What do you mean by food infection? Food infection is that it mainly generally involves the microorganism present in the food at the time it is consumed. Once inside the human beings, now they begins to grow and causes the diseases and diseases like the cholera, diarrhea, dysentery and typhoid also the example of the infection disease due to the eating of the contaminated food. A number of viral infection may also be contacted by the main through the contaminated food and that not be processed or handled adequately. These are the infection and the example of the food infection due to this microorganism is mainly is hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, and hepatitis C. All these are causes due to the infection of the microorganism. And poliomyelitis is also the one of the example of your contamination disorder. And your that various type of respiratory and intestinal disorder. I already discussed about that. That is the respiratory infection like that may be that viral infection. आपण माने भी जो कोविड भी देखुतिले सी भी गोटे ऑर्गेनिज्म या गोटे वायरल इन्फेक्शन पई होतला. सिमिलरली आपण माने जो खाद्य रे हमर जो खाद्य नली रहै जीआई ट्रैक्ट रहै जीआई ट्रैक्ट जो देखा जाउतबा समस्त प्रकार इन्फेक्शन मध्य से गोटे गोटे प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो इन्फेक्शन पई ही हेते दैट मे बी डायरिया हे पारे डिसेंट्री हे पारे किबा टाइफाइड हे पारे किबा कॉलेरा मध्य हे पारे बिकॉज़ कॉलेरा रो मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होची माइक्रोबैक्टीरियम Vibrio cholera. Vibrio cholera is the microorganism which is responsible for the causes of this cholera disorder. Okay, this is food infection and one is the food infection and the another one is the food intoxication. Food, what do you mean by food intoxication? Means आमे माने जेते बोले देखुथिबे आपण माने आमे जेकोनसी फूड पार्टिकल्स आमे खाद्य माने पार्टी को नउचंती या खाउचंती एनी फॉर्म रे आमे जेतोळे आमे ओरली नउचंती आमे नबा पूर्वर ही से ऑलरेडी कंटामिनेशन माने कंटामिनेटेड हे जाइथिबो बाय द एनी काइंड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म माध्यम रे तो दैट टाइप ऑफ कंटामिनेशन इज कॉल्ड एज द फूड इंटॉक्सिकेशन. बुझेला
आमी तो ए जो ता पूर्व में पढ़ी फूड इन्फेक्शन तो आमे कोन गोटे जिंस नेला परे तापर हमर बॉडी रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्पटम्स डेवलप होला एंड डिफरेंट डिसऑर्डर भी होला तो सेटा होची आपनकर फूड इन्फेक्शन बट फूड इंटॉक्सिकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फूड कंटामिनेशन एंड फूड इन्फेक्शन यू रिमेंबर वन थिंग आपन मानकर जो थ्योरी पेपर जो एग्जाम आसे ना सेत्र प्राय व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड इन्फेक्शन एंड फूड इंटॉक्सिकेशन प्राय टाइम क्वेश्चन रे आसी जाय बोथ आर डिफरेंट जोटा परे इन्फेक्शन हबो सेटा होची आपनकर कोन फूड कंटामिनेशन बट जोटा फूड इंटॉक्सिकेशन होची जेतबेले आपण खाद्यटे नबा पूर्व ही ऑलरेडी से टॉक्सिक है कि रहिची मींस इन्फेक्टेड है कि अछि एंड ताको ता परवर्ती अवस्था रे हम कंज्यूम करूचंती एंड दैट कॉजेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर दैट इज द फूड इंटॉक्सिकेशन ओके बुझियो छी ना बुझियो नी हाँ मैडम आज से स्पीड Yes, ma'am. आज माने Yes, ma'am. चली बिनी पूरा स्पीड रे दौड़े के बुझी होची मैम Yes, ma'am. बुझी होची ओके अदरवाइज आपन जहाँ रहिबो सेटा रहि जिवो मते कहबेनी मैडम कोर्स सिलेबस करबेनी मैडम आपण हमको पॉसिबल क्वेश्चंस देबे ना नहीं कौन परीक्षा ପାଇଁ वो आपन आगे मु तो जहाँ पढ़े छी अधा जन तो किछि गोटे भी पढ़ी ना आपन पढ़िला पर मते पॉसिबल क्वेश्चन पचारिबो मु कहि दिबो आपन मानको ओके ओके मैम थैंक यू फास्ट आपन को वर्क करिया पे पड़े मु जेतिकी देइछि मोटू जेतिकी एक्सट्रैक्ट करचंती आपन माने सेतिकी निजे यूटिलाइज करके ब्रेन रे ताको पाठ आगे पढंतु देन मो तो माने मैडम पढ़ी नले परीक्षा केमती दबु जे पढ़ी तो निश्चय ओके मैम Food intoxication is it mainly involves the toxic substance produced in the food by the microorganism before it is consumed, and when such food is eaten, the person becomes very sick because of these toxins. And mainly the example of the food intoxication is your Clostridium botulinum and Staphylococcus aureus. They cause bacteria food poisoning because of the toxins they gives rise to in the food. Poisons produced by the Staphylococcus causes the स्टाफिलोकोकस होची गोटे बैक्टीरिया जोथि पाइन कि आपण मानकर जेतोले हमर खाद्य विषय हम बॉडी भीतर को जाउची हम जीआई ट्रैक्ट भीतर को जाउची कॉजेस द सो मेनी टाइप ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस लाइक द आपण को नाउजिया करे पारे वोमिटिंग करे पारे एंड एब्डोमिनल पेन इज आल्सो कॉजेस एंड द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम कैन किल द causes and mainly can kill it causes the dizziness and mainly it's difficult in swallowing speaking and breathing and finally paralysis बुझी पाले क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम गोटे एई प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टोटली आपण मानकू जेतबेले हमर हम ताको ओराली नै जाउछंती तो आपण तापरे आ जदि किछि खाद्य खाउछंती खाद्य खाई परिबेनी स्वॉलोइंग में भी डिफिकल्ट होबा एंड आपणकर ब्रीदिंग रे मध्ये प्रॉब्लम हबो कथा कहि परिबे प्रॉब्लम हो फाइनली इट बॉडी रे आपणकर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करिबो एंड कॉजेस द पैरालिसिस बुझियला तो मने रखंतु क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म केते बड़ प्रकार इन्फेक्शन एंड मेनली आपणकर एटा जितो एंड स्पीकिंग एंड द ब्रीथिंग एंड फाइनली इट कॉजेस द पैरालिसिस द नेक आर्म्स एंड द लेग्स मसल्स ओके एंड आ गोटे प्रकार इन्फेक्शन होची आपणकर मोल्ड्स इन्फेक्शन आपण माने देखिथियो मोल्ड जनरली सब भीतर लागि जाइते एंड मोल्ड आल्सो प्रोड्यूस द टॉक्सिन इन द फूड दे अटैक दीस टॉक्सिन्स आर कॉल्ड द माइकोटॉक्सिन the toxin produced from the mold is called as the mycotoxin one mark question may be asi pare what do you mean by mycotoxin the mycotoxin hochi jo toxin ta apankara mold ro asu that liberate hochi it is called as the mycotoxin and specifically na this mycotoxin once commonly known as the aflatoxin what is aflatoxin mainly found in the peanuts evam sometimes ame jetebele mokka ru madhya ame aflatoxin pai pariba and wheat rice sorghum and the soybeans also may be affected by the aflatoxin which have been attacked by a particular molds and due to the infection of this aflatoxin it mainly causes the liver disorder and due to the infection of aflatoxin tomar mane specifically amara liver को से first affect करे and आपनकर समस्त प्रकार सीरियल्स रे मध्ये आपण एवडा को इन्फेक्शन हबर चांसेस अछि and the toxic mainly causes the gastrointestinal disturbances and mainly it causes the severe types of gastric irritation and the painful cramps in the legs gangrene in fingers and toes and sometimes depression may be occur weakness and convulsions legs gangrene is also very common gangrene is a condition gangrene कोन बुझछन्ती कहिला पूजो हे जीवा मैडम घा हे के पूजो हे जीवा इन्फेक्शन रो आपनकर से जो
हेलो हेलो मैम हेलो मैम को कॉल आसी गले आसी जाइछ बोधे से ब्रेक ओ होचे अच्छा अच्छा आसीबे बोधे मैम। ମ୍ୟାଡାମ ଜଏନ୍ କରିବେନି ବୋଧେ? मैम कोन जॉइन करिवेनी? କରିବେ କରିବେ କଣ ଗୋଟେ କାମ ଥିବ କି କଲ୍ ଥିବ। କଲ୍ ନେଇଥିଲେ ତ ମ୍ୟାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟି ଜଏନ୍ କରିସାରନ୍ତେ। कौन असुविधा है? मैम बोधे लेफ्ट करी गले किछि काम अछि कि कोन? मैडम लेफ्ट करी गले, मैडम को काम अछि?
मैडम सेमती तो नुह से कही कि जानती नेट से तो कही कि जिबे सेमती जिबेनी ना नारे ମ୍ୟାଡାମ नाना ଆସିଲେଣି ମ୍ୟାଡାମ आसिले तो हाँ मैडम हाँ एक्चुअली ना ओके हाँ इटी किछि प्रॉब्लम थिला एक्चुअली तो माने डिस्कनेक्ट हे जायतिला अगेन मु ताको पुनी आउथरे हे करले ओके मैम आरंभ करिबे आरंभ करूची मु अगेन Yes, ma'am. Yes. कोन कहउछंती बिलान सर No, ma'am. ମୁଁ କହିଲି start କରନ୍ତୁ। ओके तो मु ऑलरेडी आमी डिस्कशन करले कंटामिनेशन बाय द कंटामिनेंट एंड कंटामिनेशन बाय द what contamination by the microorganism in the microorganism mainly food infection and food intoxication is there and how the mold will also causes the contamination and sorry intoxication and in the molds also aflatoxin is the one type of example and how the aflatoxin causes the different types of health issues. And now I will discuss about the molds. Molds is nothing. Molds is the one type of fungi. And this fungus आपण माने देखि थिबे different types of जितोळे हमें fruits हो किंबा ब्रेड हो एमती किछि जिंस को जितोळे हमें prolong time धरि के हम प्रॉपर्ली ताको न ये करि के हम रखि थाउ ना तो से समय से कोन हेता है सेतरे विभिन्न प्रकार माने फंगस बा मोल्ड्स इन्फेक्शन हे जाय थे एंड से उडा मध्ये आपनकर बहुत प्रकार रोग करिबारे से हेल्पफुल हे थाए mainly आपनकर due to the molds na never buy any foods in the poor condition like जेतबेले हमर कोनसी जिंस जदी ओवर राइप होउची या डिस्कलर्ड हे जाउची ब्रुइस्ड हे जाउची किबा कट वेजिटेबल्स फ्रूट्स should not be purchased because जेतबेले हमें टेक्निकल ग्लिच होउछ धन्यवाद बोले So due to the infection of the molds, it also causes the so many types of health hazards. And specifically now, when we are buying anything na fruits or vegetable, आमे सब बोले जोटा ओवर राइप हे नथिबो कोनसी प्रकार क्रैक नथिबो आ जोटा कि माने तारा कलर और डिस्कलरेशन हे जायतिबो सेही प्रकार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को आमे जेते दूर संभव ताको आमे अवॉइड करिया को पड़िबो बिकॉज़ व्हेन बाइंग द फ्रूट्स टू लास्ट फॉर द सेवरल डेज ना इट इज एडवाइजेबल टू स्टैगर द राइपनेस so that at the time of the consumption the fruits is just ripe and not overripe. In other words, don't buy all at the same stage of the ripeness. Buy fruits which are slightly underripe. Okay, and specifically the most growth is noticed on any foods. Never scrap it off and eat the remaining food. बुझी पाले हमें जोड़ा के करी थांते टिके नष्ट होईची तो ताको काटी के पपाड़ी दियो एंड रेस्ट रेसिडुअल जिंस को हमें कम करथांते कंज्यूम करी थांते से पाचिला कदली हो या कोन होची हो बट आमे सेही सब जिंस को निहाती रूपे अवॉइड करिबा दरकार हमर आपन को आखि की होते देखा जाउनी से सेति की पार्ट को नष्ट करची माने सेति की पार्ट ही हमें डिस्कार्ड करी तो एंड द रिमेनिंग पार्ट वी आर कंज्यूम दैट बट इट इज नॉट गुड एटा आपन को मध्ये नर्वस टॉक्सिसिटी करे पर हेल्पफुल हेतै एंड स्पेसिफिकली इट विल इंपैक्ट अपॉन योर जीआई सिस्टम आल्सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिस्कार्ड पूरा जेते दूर संभव आपन जेति की नष्ट होची तार डबल माने जागा को कट करी ताको पपाड़ी दियंतु या छोटो जिंस जति हेची ताको टोटल डिस्कार्ड कर देबा ही उचित एंड स्पेसिफिकली ना the stem area of the ripe and healthy looking tomatoes or plots show mold growth it must be rejected and it is if
कुकिंग माने आमे कोन भाबंती जे जदि भी मने करो आमे ताको नेई भी जाउचंती ताको आमे भाबुचंती जे आमे ताको कुक करि दउचन एंड दैट कुकिंग मेथड रे मध्ये तार जो भी माने इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अछि से सेtre डिस्ट्रॉय हो बट इट इज नॉट लाइक दैट बुझी पाले ना नहीं तो यू हैव टू डिस्कार्ड दैट पार्ट and specifically now molds growth which must be removed by the washing and subsequent drying is essential. If drying is omitted now the molds will remain because of all the factors flavoring molds growth and the moisture availability in the most important. And specifically the food grains and nuts must be dried immediately after harvesting and only when sufficiently dried should be stored in a clean, dry and airtight container in a cool place. The stored goods must be periodically inspected for the केकिंग दैट इज द क्लम्पिंग टुगेदर फॉर्मिंग स्मॉल और लार्ज लम्प्स जोटा कि आपण मन देखिथिबे चाउल रे हो किबा अट्टा रे हो एंती किबा सुजी फुजी रे आपण मन देखिथिबे जोटा कि हमें बहुत दिन रखी देला परे जदि हमर एक कंटेनर वाला डब्बा न थाए या हमर जदि माने करो कोनसी कंटामिनेटेड डब्बा रे भी भर्ती कर देछन तले सेटो लम्प फॉर्मेशन हे जाय थाए हमें सेटा ही मोल्ड आपण कर मोल्ड इन्फेक्शन ताको ही हमें कहबा एंड यू हैव टू डिस्कार्ड से पर्टिकुलर सेतक मोल्ड को आपण पड़ंतुनी ता पाखा पाखी एरिया रे रहितबे जिंस को मध्ये आपण डिस्कार्ड करंते एंड दैट्स व्हाई ना व्हाइल प्रिजर्वेटिंग एनी थिंग्स ना प्रथमे आपण जो कंटेनर रे रखुचन ताको प्रथमे आपण भलसे स्टेरिलाइज करबा निहाती दरकार ताहाले ही हमें मोल्ड रो कोनसे प्रकार इन्फेक्शन फ्री फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ मोल्ड इन्फेक्शन mold contaminated food must always be burnt or bruised and not simply discarded lest the mold spreads and contaminate other human or animal foods also. This is all about your food and next I will discuss about the food adulteration. What do you mean by food adulteration? वेरी माने आजिकल एटा गोटे बहुत कॉमन एंड मो भाबुची समस्त ही जानिथिबे व्हाट इज फूड एडल्टरेशन एंड मने रखन इट्स वेरी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर जो थ्योरी पेपर एग्जाम होबो ना एटा पे गोटे निहाती एइतिर क्वेश्चन तो निश्चित ही आसी थाए मोते तो लागे तो जेबे मो क्वेश्चन पेपर देखेटा थाए फूड एडल्टरेशन माने कोन बुझिबा हमें मिलावट मैडम मिलावट माने कोन मिलावट कोन माने मिलावट फूड रे जो पेस्टिसाइड सो पड़े इंसेक्ट ये सो माने हार्मफुल केमिकल्स जो ऐड हुए फूड जेमते कि आपण काली कहउतले जेमते हमें कोनसी प्रकार सीरियल्स जो यूज करे व्हाइट कलर जोटा रुहे ई सब जे मिक्स अप हुए ना केमिकल किछि तो सेटा मैम को जेतेबेले फूड किछ रिफाइंड तेल रे पाम ऑयल मिसेगा सेटा अडल्ट्रेशन एग्जैक्टली फूड एडल्टरेशन माने से जो आपण जी मैडम जी कहउतिले सेटा होची देखंतु एडल्टरेशन होची आमे गोटे खाद्य रो माने तार गुणवत्ता को आमे बजाय रखिबानी आमे तार क्वांटिटी को बढ़े देबा एंड मार्केट रे केमति तार अधिक आमे लाभवान हे परिबे सेही भलिया किछि जिंस आमे आपण जोटा कहउतिले किछि प्रिजर्वेटिव देबा किबा किछि ये देखि हम सेटा नो एडल्टरेशन होची किछि जिंस सेही भलिया किछि जिंस मिसे देबा जोतरे कि मिलावट माने आपण को सेही जिंसटा तार ओरिजिनलिटी रहिबनी बुझिला जेमति कि आपण मन देखिथिबे जदि आमे मार्केट रे ब्लैक पेपर किनुचंती तो ब्लैक पेपर जेमिति ब्लैक पेपर आपण ओरिजिनली पाइबा बहुत कम एंड ब्लैक पेपर भलिया ही आपण मानन को सीड सेtre ऐड हेथिबो तो दैट इज द एडल्टरेशन ओके मैम चाउल रे गोड़ी मिसी थाए सेटा भी हबो एग्जैक्टली चाउल रे गोड़ी मिसिबा हळदी गुंड रे अदर पाउडर मिसिबा लंका गुंड रे अदर पाउडर मिसिबा मस्टर्ड ऑयल रे भी मिसते मस्टर्ड ऑयल रे भी all these are the examples of the adulteration and specifically adulteration is that something is added to food item which is inferior in quality or makes it impure with the intention of making more profit okay and something is removed from a food item which reduces its quality and that is the adulteration and simply adulteration definition is like any substance which is used to adulterate a particular item so the foods is called the adulterant okay and water is adulterant for the milk and semolina is an adulterant for the fine grained sugar yesterday I already discussed about this na jetobla ame choose karuchanti kiछि एनर्जी गिविंग फूड्स किनला बेले केमती हमें चूज करियो मु आपण मन को भल से बुझी थिले हम सेहिथिरा हमें कोन करबे जत सुगर प्रोडक्ट हमें किनुछंती बड़ा वाला ग्रेन्युल्स वाला हमें सुगर को परचेज करबा बिकॉज़ सेते एडल्टरेटेड मिसी थाई पारे जेमति कि हम सेते कोन सुजी को पाउडर फॉर्म रे मध्ये देई पारंती तो दैट्स वे एटा होची एडल्टरेशन इट इज द एग्जांपल ऑफ योर adulteration
and common adulterant and their health hazards जेमति कि आपण माने देखि थिबे सिंपली होची sands marble chips and gravels and earth एगुडा को होची अति simpler form रे आपण मन को सब जिंस जेतबे हम when we are purchasing any kind of legumes pulses or rice or cereals like this product na it must be adulterated by the sands marbles chips gravels and the earth mostly they added to the grains pulses coriander seeds rice etc if ingested they can upset our GI tract mainly आमी तो लेटा ingest कर माने आमी inject करंती through the oral cavity it causes the so many disorder in our GI tract gastrointestinal disorder they're extremely unpleasant in the mouth and can hurt the teeth and the gums also and mineral oil sometimes kon hochi mineral oil ro mode adulteration hochi used for the coating black pepper to prevent the fungal growth and specifically that they can be serious health hazards as some minerals oils are toxic for human beings and contains the compounds capable of causing mainly the carcinoma or cancer and petroleum oils को मध्य adulteration होची and that is mainly adulterating edible oils used for the motor oils are in the example these oils are the toxic and cancer causing mane rakhi tantu petroleum oils is very toxic and it causes mainly the carcinoma specifically it mainly caused for the growth of our cancer cell को बढ़े बारे मध्ये से help करे body and water is also the very easy adulteration process we are using that agent also like mostly used the adulterant milk generally the source of the water is not clean and therefore it also carries the infection जो माने गोड़ माने या जो माने गा माने करे खीर देंदी इवन सहर रे मध्ये आपण माने देखिथिबे से माने कोट माने पानी ता तो खाली खीर रे मिसेबा किछि बड़ जिंस न होय तो माने मिल्क रो क्वालिटी माने तार कमी गला बट आमी कोन करंती से जो पानी ता से माने जो सोर्स टू से पानी ता नेके आसिन दैट वाटर इज नॉट गुड दैट इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड वाटर बुझि पाले ने एंड जेते बोले आमी सेइटा को आमी कंज्यूम करंती एंड दैट कॉजेस ता कोन क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म भलिया इन्फेक्शन होबार मते चांसेस अछि बहुत सारा मिल्क रो इन्फेक्शन बहुत सारा रोग हुए आपण जिते प्रकार आपण देखंतु फूड पॉइजनिंग ना मैक्सिमम केस आपण को मिल्क रो ही आसी थाए सेतमे आपण मन देखिथिबे मिल्क कोटे एते जिते भलो जिंस तार प्रॉपर वे रे जति हमें ताको प्रिजर्व न करबा ना ताले से सेते शीघ्र आपण खीरटा को आनी छथि संसे जति गरम करके रखी देबे से 8-9 घंटा पर्यंत से आपण जति नॉर्मल रूम टेंपरेचर मते से मेंटेन हे के रहजो बट हम जति प्रॉपर्ली न रखि छथि टाइम पीरियड अधिक हे गला परे भी जति हम खीर को गरम करछन तार ना टेस्टी थाए ना तार आउ माने सेइतरे मध्ये बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होबारे हेल्प करता है तो सेइति पई केमिति आपण से जिंस को माने यूटिलाइज करूछन या प्रिजर्व करूछन हम केते समय पर हम ताको ये रे लगोछन दैट इज आल्सो वेरी vital and another adulteration is your RG monacids and oils RG monacids all of you are know about this the yellow flowers plants that looks like a papaya with the bluish silver vein prickle leaves RG monacids resemble mustard seeds जेमति आपण सोरिष मंजी जेमिति माने सोरिष हम जो खाउछन जो बळे आर्जिमोना सीड्स मध्ये एक्जेक्टली सेही बळे बट इट इज वेरी 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 टॉक्सिक इन नेचर जदि हम आर्जिमोना सीड्स को जत अडल्ट्रेशन हे जाउची एंड हम त खाद्य रे कंज्यूम करचंती इट कॉजेस अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम लाइक द एपिडेमिक माने ड्रॉप्सी होबार भी संभावना अछि एपिडेमिक ड्रॉप्सी रे कोन है स्टार्ट मेनली आपनकर प्रथमे से कोन करे जो जीआई प्रथमे से आपनकर जो गैस्ट्रो एपिडेमिक ड्रॉप्सी मींस अक्युमुलेशन ऑफ द एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस आपनकर एक्स्ट्रा फ्लूइड जे कि अक्युमुलेट करि जे तो ड्रॉप्सी हबो एंड इन दैट केस ना प्रथमे आपन मानकर कोन हबो आपनकर जीआई ट्रैक्ट प्रथमे इन्फेक्शन स्टार्ट्स हबो एंड इन्फेक्शन स्टार्ट हला परे इट मे कॉजेस द स्वेलिंग पूरा बॉडी स्वेलिंग हे जिवो एंड आपनको हाई ग्रेड फीवर मध्ये होबार संभावना अछि एटा होची आर्जिमोना सीड्स जो रहिछि सेइथिरो इन्फेक्शन माध्यम रे माने सेटा जदि अडल्टरेटेड हेछि ताहाले हमको एई भले सीरियस डिसऑर्डर होबार मध्ये संभावना रहिछि specifically na argimona seeds resembles the mustard seeds and they are mixed with them during the extraction of the mustard oil and specifically both the seeds are oil and are highly toxic and the consumers can lose his eyesight and develop a condition it is called as the epidemic dropsy jota mu apanku manku ebe kohuthili jete bole ame argimona seeds generally dekhantu
सोरिष आजिकली प्रोडक्शन आग अपेक्षा बहुत कमी जाइए बट आमको सोरिष घरे घरे हम समस्त सोरिष तेल बिकज आजिकली सबुतक कंसल्टेंट माने प्रेस्क्राइब कर सोरिष तेल इज मच माने मच बेटर देन दैट ऑफ द अदर काइंड्स ऑफ ऑयल व्हाट वी आर कंज्यूमिंग ना तो सेति तार प्रोडक्शन तो एते नाही बट आमे से जो आर्जिमोना सीड को मिसे की आमे कौन करते अडल्टरेट करके अधिक ऑयल को प्रोडक्शन करके हम पाखरे पहुंचे जाउची जोटा कि सेटा आपनको हेल्थ पे इट कॉजेस द सीरियस एपिडेमिक ड्रॉप्सी कोन आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट and dropsy is a disease in which the water is made collect in cavities gastrointestinal disturbances and it also causes the irregular fever with a rash or exposed parts of the body and finally ना जिते बोले आपनकर जो माने आर्जिमोना सीड्स रो कोनसी प्रकार जति अडल्टरेशन हेची and if you consume that one then it causes the very serious health problem and आपनकर कार्डियक एक्टिविटी को मध्ये से कमे देबो फाइनली डेथ भी होबार भी संभावना अछि सेइथिपाई बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम द डे वन आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट जे आमे को टाइप सिलेक्शन ऑफ द फूड ग्रुप सिलेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स इज वेरी 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 वाइटल आमे कोन त खाइबा दैट इज सेकेंडरी थिंग्स सेइथिपाई आपण माने देखिथिबे बहुत घर लोक माने मार्केट को स्त्री लोक माने जानती मु देखछि वेजिटेबल वगैरह ए सब जिंस जहां भी माने मार्केटिंग पर्पस जेतल जानती स्पेसिफिकली खाइबा रिलेटेड किछि आनिबार थाय तो माने सेमानकर टिके दूरदृष्टि देन दैट ऑफ द एटी जदी कहिथिबि ताले केही भी मेल पर्सन दिबे कहि मैम हमर कोन नाही कि बोली ए छाडंतु बट ए जदी आर्जिमोना सीड्स को हमें नौचंती ए प्रकार कॉम्प्लिकेशन हबार चांसेस अछि तो हमें ताकू देखि कि मध्ये हमें जेतबेला हमें नौचंती ताकू गोटे कंसीडर करबा एंड द सेकंड वन इज योर Lathyrus sativus এটা ওটে হচ্ছে সিরিয়াস হেলথ ইস্যু প্রবলেম বিকজ when we are consuming the কেশর ডাল না আগে আমি মানেଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଯେହେତୁ এটা অলরেডি ডক্টর মানে মানে কହି সারিলেনি ইট ইজ এ न्यूरोटॉक्सिक इन नेचर बुझिले आगे गोटे माने लास्ट केते वर्ष पूर्व एकाथरे गोटे एरिया लोक माने थिले जो माने कि जो एरिया रे कि ओनली केसर डाल प्रोडक्शन ज्यादा होतला एंड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ दैट केसर डाल इट कॉजेस द nervous disorder and it is mainly it causes the neurotoxic in nature total nervous system को से पूरा inactivate कर दोतला even whole body paraplegia हे जाउतला ने हे गला due to the intake of this केसर डाल तो सेइथिपाई सेइ दिनो तो एटा गवर्नमेंट बैन कर देला एवं आजिकली तो प्राय मार्केट रे सेटा किए नो नांदी बिकॉज़ इट कॉजेस द न्यूरोटॉक्सिक इन नेचर एटा मध्य अज अडल्टरेशन एथरे मध्य मिसाई की करा होची केसर डाल is a very hard means hardy plants and the pulses derived from it is to mix with the bengal grams which is more expensive they जानिथिबे आपण माने bengal gram डाल केते किलो एंड केसर डाल इज वेरी चीप तो दैट्स से माने केसर डाल को अधिक ये करिया पे एटा नै जानते एंड दैट कॉजेस द mainly it cause a form of crippling paralysis in boys and men 5 to 45 years of old and specifically the disease is called as the lathyrism due to the intake of this kesari dal Lathyrus sativus it causes the what lathyrism disorder eta भी अपन को 5 मार्किया क्वेश्चन रे आसी पारे मैक्सिमम ए क्वेश्चन ता भी आसी थाई lathyrism कोन अदरवाइज अपन को 2 मार्क्स क्वेश्चन रे मध्ये एटा आसीबार संभावना मैक्सिमम टाइम ड्यू टू द intake of this kesar dal it causes the lathyrism and this lathyrism is nothing it is the neurotoxic in nature and it is called the it is neurotoxic in nature okay and another one is your and due to the this kesar dal infection it also starts with the stiffness of the knees and joints legs with pain around the knees and ankle joint and sometimes it also affect the thigh also
ये जो केसर डालटा कौन खेसारी खेसारी केसर डाली अपन जहाँ बुझछन सेटा ही है। And the other seeds like the papaya seeds is also adulterated with the black pepper and tail also means polish pulses. It is also causes the stomach cancer and washing soda or maida used to adulterate the icing sugar. मु काली कहिथिले icing sugar भी हम यूज करबे तो icing sugar पई मध्ये हमरो कोन यूज होची माने washing soda को मध्ये adulterate करत it is also cancer causing. And sometimes the lead chromate and the metallic yellow color like the metallic yellow affect the reproductive organ. Okay, metallic yellow color हमें specifically बहुत सारा food item रे हमरो use होता है and used to give the color to the turmeric and the हमारे जो माने मिठा जो मार्केट रे जो मिलुची येलो कलर मिठा प्रिपरेशन होची ना सेइथिरे ए येलो मेटालिक कलर यूज होता है मेटा इट्स कॉल्ड एज द मेटानिल येलो और द लेड क्रोमेट बोली ताको मध्ये कहबा and it causes mainly it is very poisonous the highly poisonous the metanil yellow affect mainly your reproductive organs and cause the sterility बुझी पाले एटा अपन करो मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी करिबारे मध्ये हेल्प करता है and it has also is the associated with the different types of cancer like the specifically it causes the abdominal cancer or any kind of gastrointestinal carcinoma जदि हमें एई प्रकार मेटालिल येलो एंड लेड क्रोमेट हम यूज करछन सेथि पाई बोली आजिकली का कंसल्टेंट माने समस्त कोहंती सब बोले हळदी पाउडर मार्केट रो आनी के डायरेक्टली आपण यूज करिबेनी बिकॉज़ हळदी रे ही बहुत सारा ए सब कलर रे यूज हेता है एंड स्पेसिफिकली मार्केट रो जो आपण खाउछंती जो कोन जिलापी जलेबी जबा जोटा आपण को लोकल टर्म रे आपण कोन कहउछन सेटा and the possible health hazards of the lead chromate include specifically it causes the anemia hemoglobin level भी अपन कर कमी छिबो and it also causes the paralysis specifically it causes the paraplegia एमते नो जे particularly अपन one organ will be affected by the paralysis it अपन कर hemiplegia हेई पारे paraplegia पे हेई पारे या quadriplegia total हाथ गोड़ सब तक मते paralysis करि पारे तो सेति पे हमें ए सब जिंस को भी अवॉइड करिया यूज टी लीव्स हमें कोन करछि टी लीव्स रे मते बहुत सारा अल्टरेशन रहिछि लाइक द dried powder and the color are used to adulterate the tea leaves and these leaves can be caused mainly the infection and food poisoning depending on the source from which it is mainly collected and malachite green हमें स्पेसिफिकली इट कॉजेस ता ना जो देखिथि आपण माने मार्केट रे जो किनुचंती ग्रीन पीस ना रे जेतोल पीस मार्केट रे अवेलेबल नथा हमें सेते बळे मध्ये जेतोल हमें कोनसी मॉल फॉल जाइथांते से रोटे रखा ही था प्रिजर्वेटिव है कि ओटे ग्रीन कलर पीस एंड सेइटा रे आपण कर स्पेसिफिकली यूज आइते मालाचाइट ग्रीन अदरवाइज आपण मन देखिथि पोटल जेतोल खरा दिन मार्केट रे किबा अनसीजन फ्रूट्स जेमती सेही समय रे आपण देखिबे मार्केट रे कोटोडे जिंस को हाथ रे धरि देला को जेतोल वेजिटेबल परचेस करछन से हाथटा ही ग्रीनिश कलर हे जाइथिबो होय ना नहीं सेंती देखि चंदी ना नहीं ना के मार्केट जानते नहीं घर या मार्केट नो जो वेजिटेबल आसला तो हमें फ्रिज रे भरंती ना तो सही समय भी आपण देखियो जतोल भरुथिबे ना तापर आपण हाथ देखिबे हाथ रे पूरा ग्रीनिश स्पेसिफिकली मो बहुत सारा देखिची हां बाइगण हो कलरा पोटल yes ma'am so that is also not good it causes mainly it causes the poisonous and cause the carcinoma and abnormality in the vital organs such as that mainly affect your kidney liver and the spleen and this is all about your contamination and microorganism contamination now I will discuss about a simple test to detect the adulteration कौन test हमें करिबा माने हमको ये adulteration को जानिबा पय स्पेसिफिकली ना detection the presence of the excess water in the milk specifically हमरो जो खीर रे केते पानी अछि या खीर प्यूरिटी केते जानिबा पय बोली a specific purity reading of less than 4 is an indication of excess water in the milk specifically म आपण मानको लास्ट क्लास रे कहिछि कि नै मन बट जेते बेले हमें लैक्टोमीटर बोली गोटे माने गोटे पैरामीटर गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि जोथरे आपण मन देखि परिबे मिल्क रो प्यूरिटी केते जदि मिल्क रो स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 4 हे जाउछि ताहले ताको हमें कहबे इट्स नॉट माने सेतरे निहात रूपे अधिका पानी मिसिछि एंड डिटेक्टिंग फाइन सेंट्स और सेमोलिना इन ए फाइन ग्रेन सुगर और सॉल्ट एटा म कहितली एथिरे एई जिंस गुडा अडल्टरेटेड होछि द सुगर्स और सॉल्ट्स विल बी डिजॉल्व लीविंग ए रेसिड्यू ऑफ द सेंट और सेमोलिना एट द बॉटम ऑफ द ग्लासेस and detecting sand or dart in the jaggery रे मिसिछि कि नै जानिया पहले इट्स वेरी simple and easy tips is to boil a little jaggery in the water and jaggery will dissolve leaving sands and dart at the
at the bottom also. Okay. This is all about your simple test to detect your adulteration. Then next one is your consumer protection. Consumer protection आमर जोटा रही food law बुझीला. Food law कौन है ना, food law जो main objective of the food law can be briefly summarized like this. Mainly this food law to protect the consumers against any health hazards arising out of the adulteration, and specifically to protect the consumer from the unfair trade practices, and to ensure and enforce fair trade practices. It is food law. And this food law, the government announced a new act called the Food Safety and Standard Act, which was 2006. And this new act came into force from the 5th August 2011, and it is consolidated and replaced all the existing mandatory Food Safety Act like the Prevention of the Food Adulteration Act FPO and MMPO and the MFPO. And food law is specifically first law Food Safety and Standards, Food Product Standard and Food Additive Regulation 2011. एथरे आपण मानकर स्पेसिफिकली कोन हुए ना रॉ बुफालो मिल्क रे माने जो जिंस रे सेति की जो आपण माने आगुरु भी जानि छथि मु कहितली जो मु एनआईएन रो गोटे गाइडलाइंस आपण मानको जति हबो पाइबे या बुक रो सब पछपटे भी प्राय थाए एनआईएन रो गाइडलाइंस माने आमे तो 100 ग्राम्स रे किछि भी कंज्यूम करछन सेथरे स्पेसिफिकली आमे पाठ पढचनते 100 ग्राम मिल्क लेले एथरे एति कार्ब एति प्रोटीन एति की फैट रहइबो ता एटा तो मैक्रो कथा मु कहछि मैक्रो को छाडले मते माइक्रो न्यूट्रिशन इज आल्सो देयर ना तो माइक्रो न्यूट्रिशन रे एति की नियासिन रहइबो एति की आपनकर थायमिन रहइबो एति की जिंक रहइबो एति की फास्फोरस मैग्नीशियम कैल्शियम लाइक अदर जति माइक्रो मिनरल्स रहइबो तो सेति की रु आपनकर कमी जाउछि ताहाले आपनकर ए जो फूड लॉ जो स्टैंडर्ड रहछि सेटा को आमे यूटिलाइज करिकि आमे ताको ये करि परिबा जे सेही आमे ताको क्लेम करि परिबा जे आमे माने आपण मन देखिथिबे मार्केट रे जे कोन से गोटे ब्रांडेड जिंस किनिला बेले तार आजिकली गवर्नमेंट रो सब गोटे लोगो लागि थाए से लोगो थाई कि मते लोक माने भूली जानती एवं से माने भी तांकर फूड रो जो क्वालिटी बा गुणवत्ता रक्षा करबा कथा सेटा भी से मानकर न थाए तो सेहिति पई ही फूड लॉ हेथिला इन दैट फूड लॉ रे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स होची गोटे मुख्य जिंस जोथे कि आपनकर Food Product and Standards and Food Additive Regulation 2011 रे different food product standards have been established under the regulation for the different parameters according to locality. Mainly आपण को locality जहां मिलतो जेमति कि milk raw हो किबा pasteurized, boiled, flavored and sterilized milk have been standardized. And the lower possible level of food additive in different food products have been defined, and all the food business operations shall confine these limits. Second one is your Food Safety and Standard Regulation 2018 रे हेतिला whole list of the type of packaging materials for different food products have been mentioned. Packaging the materials should be hygienic, free from the cut marks and the phenols, etc. Newspaper or any such materials should not be used for food wrapping or storing. Okay, in the Food Safety and Standard Regulation 2018 रे आथिला, and Food Safety and Standard Fortification of the Foods and Regulation 2018 रे आसीथिला. Fortification of foods मीन आमे कोन बुझछन्ती आजिकली मार्केट रे बहुत सारा जिंस इवन आपण माने ग्रोसरी दुकान रे मध्य बहुत सारा आइटम अवेलेबल जोटा कि फोर्टिफाइड माने जिंस मार्केट रे आसलानी मते एग्जांपल कहिबे किछि अरुंधति मैम कहंतो what do you mean by fortification? आपण पते कोठी गोटे किछि गोटे ए न्यूट्रिशन तो किछि करूचंती ना आज्ञा आपण कोन करंती कहले मते मैम मोर पीएचडी बॉटनी रे अच्छा एटा पई काई कि इंटरेस्टेड फूड एंड न्यूट्रिशन रो मैम सेटा गोटे आरंभ रो मोर इच्छा थिला कि न्यूट्रिशन ऊपर टिके जानिबी ओके तो मते कोहंतु मैडम बहुत बढ़िया भलो सब्जेक्ट आपण रखि छंती आपण मते कोहंतु फोर्टिफिकेशन कहले हमें कोन बुझिबा स्पेसिफिकली एटी आपण डाइट एंड न्यूट्रिशन को नेकी कहबे अदर फोर्टिफिकेशन मते कहबे ना व्हाट डू यू मीन बाय फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड्स मैम समा अच्छा आपण ए सब्जेक्ट भर्ती की लागु छी आपण को एथरे किछि मिलु छी माने भलो लागु छी यस यस मैम मते बहुत इंटरेस्ट थिला बहुत खुशी भी लागु छी काना मते जोरा पैशन थिला टिके आगु जानिया पे मो भी से कोर्स ता करिया को पाउची
अच्छा ओके कुहंतु व्हाट डू मीन बाय फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन मीन्स कौन कहले अडल्ट्रेशन इन फूड जेमति कि आमे adulteration is total different and fortification is total different आज्ञा हाँ कुहंतु फोर्टिफिकेशन कहले हम कोन बुझे मैडम जो फूड ପାଇଁ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ପୁରା ଭଲ ଏଥିରେ କିଛି ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ ସେ ଫସାଇ ମାନେ नो ଲ that is ଅଣ୍ଡରରେ ସେଟା ଆସୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ना ना ମ୍ୟାମ୍ ସେଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ନୁହଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ପୁରା ଗମ୍ଭୀର କହିଲେ ଅଲଗା ସେଇଟା ଜିନିଷ ବୁଝିବେ ଯଦି ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ना ଯୋଉଟା मैम ଯୋଉଥିରେ କିଛିଟା ସ୍ପେସିଫିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଥିବ ସେଥିରେ ଆଉ ସେଟା ଯେ ମଣ୍ଡେଟରୀ ଥିବ କୁସୁପାରେ ଯୋଉ ଯେମିତି କି ଫସାଇ କହିଲେ ମ୍ୟାମ୍ ସେଥିରେ କିଛିଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଥିବ ଭ୍ୟାଲୁ ନା ସେ ଟୋଟାଲ डिफरेंट थिंग्स ना किछि नहीं से बिल्कुल से नो फोर्टिफिकेशन आपण आज हां जाय कि देखिबे वेबसाइट देखंतु स्पेसिफिकली सिंपली आपण जानंतु आमे जो चाउल नउचंती बुझि पाले इवन गवर्नमेंट रो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में हमर गोटे डिक्लेरेशन आसी जे 2024 सुधा हमर इंडिया रे जहां भी प्रोडक्शन होउची आमे जहां भी बाहर को ट्रांसपोर्ट करूचंती तो सब माने नॉर्मली दिल्ली वाला जेंति गरीब लोक माने बुझिले जो माने बीपीएल एपीएल ग्रुप रे जो लोक माने कैटेगरीज माने बिलोंग्स करूचंती सेमानन को पई आमे जो फूड सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट जो देखंतु गवर्नमेंट रे तो बहुत सारा प्रचेष्टा रहिछि बहुत सारा जगह रे बहुत सारा जिंस सप्लीमेंट माने सप्लाई करूचंती जेमति कि आपण मानकर बीपीएल ग्रुप रे जो माने रहउछन से माने कोन दोचन स्पेसिफिकली चावल दोचंती आगु गहम दोउतिले देन डाली भी दोउतिले को जगह रे सोयाबीन बॉडी भी दोचंती इवन गवर्नमेंट स्कूल मानकर आपण माने देखिथिबे अंडा दोचंती देन आ को जगह रे खीरो भी दोचंती बादाम रो लड्डू दोचंती एंड आजिकली की को जगह रे मते कुछ मांडिया रो भी अवेलेबल माने मांडिया जो जगह ले प्लेंटिली अवेलेबल सेठी मांडिया को मते सप्लाई करलाने तो फोर्टिफिकेशन होची माने फोर्टिफिकेशन मींस हमरो जे कोन से जिंस रे आउ चाउल रे जहां भी विटामिन्स मिनरल्स जहां भी न्यूट्रिशन रहिछि से चाउल तो लोक माने को सरकार जोगे दोचंती 2 टंका रे बुझिला नै ଟଙ୍କା किंतु କେତେ ମ୍ୟାଡାମ ଟଙ୍କା କେତେ सब कोन कहले मैडम ଟଙ୍କା କେତେ ମ୍ୟାଡାମ 2 ଟଙ୍କା ओ ନୁହଁ सॉरी ଟଙ୍କା क्या ଚାଉଳ ओके ओ टंका के 2 टंका मु जानिनी बट बहुत लो कॉस्ट रे दोछंती गवर्नमेंट तो से जो चाउल रो गुणवत्ता को बढ़ेबा पाए बोली गवर्नमेंट कोन करचंती सेथे गोटे कोट मिसउचंती गोटे माने ताको फोर्टिफाइड करूचंती फोर्टिफिकेशन इज द वन प्रोसेस जो प्रोसेस रे की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट रो डेफिसिट थाउची से जिनिस रे ताकू विटामिन्स मिनरल सब एनरिच करके गोटे कोट करके से चावल रे मिसई के देथांती एवं सेटा गवर्नमेंट रो एबे वर्तमान प्रचेष्टा हला सेई भली चावल प्रत्येक आपनक होलसेलिंग दुकान रे हो या जो माने जो छोट छोट किरानी दुकान रे मानक रे मध्ये अवेलेबल करिवार या कि समस्ते केही मध्ये आपनकर अपपुष्टि रो शिकार हेबे नाही तो एटा मु गोटी मात्र आपनक एग्जांपल देली चावल रे नॉट ओनली चावल सहित डाली हो आपण माने देखि मार्केट रे मैम जानतो आउ टिके नॉर्मल कहंतु मैम चावल आउ टिके अपेक्षा कहंतु कोन कहले मैम मैम आउ टिके कहंतु सेटा बुझी हेलानी आउ टिके कहंतु मैडम कोर्स सरी बनी 5:11 बजिलानी मते सारी बार अछि आज सब तक जिंस आपनकर हला हां तो कहूची माने खाली माने चावल मु गोटे एग्जांपल दोची चावल आज काली माने चावल रे जहां भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट रहिछि तारो सेटा को छाडी की अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जोटा कमी रही से सब जिंस को माने ताको गोटे केमिकल फॉर्म रे ताको कोट करि दोचंदी चावल रे किबा ताको पाउडर फॉर्म रे ताको विभिन्न प्रकार केमिकल प्रोसेस रे देकी ताको एनरिच करी की ताको से चावल रे मिसा जाउची जोटा की आगो को जाय की हमें जहां भी जो लोक माने हमें डेली बेसिस रे हमें कंज्यूम करचंती हमर कोनोसी प्रकार माल न्यूट्रिशन रो समस्या जेमति न रहिबो सेटा होची आपनकर कोन फोर्टिफाइड सीरियल्स ताको सिंपली कोआ जाय फोर्टिफाइड सीरियल्स मींस आपण मार्केट रे आज भी जानतो एबे मु आज कहली प्रैक्टिकली आपण मैम कोन कहउचंदी न कहउचंदी आपण प्रैक्टिकली गोटे दुकान को जानतो आपण नॉर्मली राइस जदी किनुती 25 टंका किलो रे ताले फोर्टिफाइड राइस नेचुरली आपण को 30 या 32 रुपीस किलो आसीबो माने ताटू तो नियाते अधिक कॉस्ट आसीबो बट न्यूट्रिशनली बेनिफिट ताटू 100 टाइम्स बेटर देन दैट ऑफ द नॉर्मल राइस एंड आपण माने भाबंतु निचे ओनली माने आपणकर राइस को ही फोर्टिफाइड करा होची या फोर्टिफिकेशन माध्यम रे ताको एनरिच करा होची विटामिन से मिनरल्स माध्यम रे एटा बिल्कुल नो नॉट ओनली राइस इज माने आपन को फोर्टिफिकेशन होची अलोंग विथ दैट राइस अदर सीरियल्स लाइक द दाल हो किबा आपन को खीरो
जो गाय क्षीर आपण माने पिउचंती ना सेटार मध्ये फोर्टिफाइड मिल्क इज आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट आपण जाय कि मागंतु फोर्टिफाइड मिल्क कोन फोर्टिफाइड मिल्क मार्केट आसु कि नै जानि परबे एंड लूण मध्ये फोर्टिफाइड हे के आसुची आपनकर गहम मध्ये फोर्टिफाइड हे के आसुची तो सेटा होची फोर्टिफिकेशन जो प्रोसेस से सेटा होई ताकू आजे fortification and the Yes. food safety and the standard fortification of foods regulation act 2018 re adding the micronutrient to the food can serve the purpose of improving the food quality or the nutritional status by connecting or reducing one or more deficiency state of population of the specific group jotre ki FSSAI has made it mandatory that every manufacturing who is fortifying any foods items shall give an undertaking of quality assurance of that particular food along with the steps followed in the that fortification. And the next one is your food safety and the standard organic food regulation 2017 re heitila jothre ki the manufacturer cannot manufacture sell offer for sell pack sell market or the important of any organic foods product without following the requirement laid down in this regulation. According to FSSAI, all the organic food product advanced for sale shall follow all the applicable provision of any of the system and program made for organic food product notified by the food authority from time to time. And another regulation is food safety and standard food or health in supplements, that is the nutraceuticals, food for the special dietary purposes and functional foods and the novel food regulation 2016 and food safety and the standard prohibition and restriction of sales regulation 2011 रे मध्ये हेतला जेमति कि आपण मानकर जो केसर दाल मु कहूतिली they are the put on the restriction on the sales of the kesar dal or the lathyrus sativus and their product because it also prohibited the sale of the skim milk or other milk curd or dahi which is not prepared from the boiled pasteurized or the sterilized milk with the added water turmeric containing any added foreign substances mixture of two or more edible oils or the edible oil may also cause some type of disorder also. And food safety and standard 2011 रे मध्ये आपनकर contaminant toxins and residue को लेके गोटे रेगुलेशन हेतिला food safety and standard alcoholic beverage regulation 2018 रे हेतिला जोटा कि आपण मानकर FSSAI has recommended the limits of alcohol content in different types of alcoholic beverages like whiskey, rum, ferny, perry, fruit, wine, and beer, brandy, etc. Then food safety and standards important regulation 2017 re jota ki there are so many food products which are important to India and it is important to check these products thoroughly to prevent and healthy hazards. And food safety and standard licensing and registration of food business regulation 2011 re madhya heitila. This is all about your food safety. And last one is the Agarmark standard. Agarmark standard is nothing. Agarmark standard hochi a specific of quality of raw food items, grade designation, and also the methods of making to indicate various grades. Anyone willing to grade and pack in accordance with the provision of the Act and rules in authorized to use the Agarmark in addition to his own trademark. And the very first standard laid down were for pure ghee and the Agarmark level 1. आपण माने देखिथिबे ए जो अगरमार्क विषय में कहूची एटा होची very important question mainly na for the domestic market and the grading and the quality control under the agarmark is voluntary but for the export purpose it has been made compulsory under the provision of the Export Act of the 1963. The commodities for the export with the mandatory agarmark certification includes food items as well as the non-food item like the wool, tobacco and the cotton. And upon mane a total of the 41 or the so different commodities are certified with the agarmark like the some food item in this list are major spices like the pepper ho, cardamom ho, chilies ho, garlic, onion, ginger, turmeric and the cumin seeds. And आपण माने एटा अगरमार्क स्टैंडर्ड मध्ये एटा गोटे माने शॉर्ट नोट्स रे आपण मानकर आसी करे या 5 मार्क्स क्वेश्चन रे आसी इट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट in your exam point of view रे तो नियत रूप एटा गोटे पढिबे बुझियला हाँ
how to choose the milk and dairy product. Yesterday I already discussed about all these things. Mane achi na kichi? How to choose the energy giving foods kali kahitili mu. Sorry thila na sorry nathila kali eta. Yes, ma'am. आ समस्त साइलेंट हेके रोचले ता माने मु कोन बुझिबी मु कहिनी बोते किछि ना ना मैम सॉरी पॉइंट सॉरी थिला मैडम सॉरी थिला वो पर्सन हमर सॉरी थिले Yes, डेयरी ma'am. प्रोडक्ट ऑल द डेयरी प्रोडक्ट आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट ना सिलेक्शन ऑफ द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट and हाँ kinds of milk available in the market and what is pasteurization, what is standardizing, food production derived from the milk, cream, butter, ghee, milk powder, khoa, paneer, everything I already discussed about that. Yes or no? yes ma'am यस मैम कौन पर्यंत जाइथिला Now I will discuss about the selection of the flesh foods, that is the protein rich foods. Okay, এটা সরি থিলা কি না সরি নথিলা কালি नो मैम no okay तो हमारो yesterday I already discussed about the protein means that bodybuilding group of foods, that is the protein, and we are getting protein from the mainly from the two sources of protein is plentifully available. One is the plant based protein and another one is the animal based protein. And the fastest protein, which one is the fastest protein? Ma'am, all plant protein. All plant protein is the fastest protein, No, ma'am. or soya protein Animal why? protein. Why? What is the reason behind it? काली कहिथिले ना काहे कि हमें एनिमल सोर्सेस रो प्रोटीन को हमें अधिक चूज करबा एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी कोन रहै छै सेथिरे Because ma'am, protein made up of amino acid और animal protein रे अधिक amount रे amino acid present थाए और plant रे absent थाए. and specifically in the animal protein we are getting the kete extra essential amino acids, 8 type of extra essential amino acids is there, and also not only that it is the first class protein बुझिला सेत पे हमें प्रोटीन को चूज कला बेले हमें सब बेले चेष्टा करिबा हमें एनिमल सोर्सेस ऑफ प्रोटीन को अधिक प्रायोरिटी दबा पाए. ओके, and selection of the flesh foods, in the flesh foods mainly the meat, poultry, eggs and fish and other seafoods. Specifically na first I will discuss about the mutton. Mutton is a very common meat available in the goat meat, and meat from the young goat is जेतेबेला हमें mutton किनिबा को जाउछन सेतेबेला हमें specifically हमें देखिबा যদি সেটা pinkish in color and has almost no fat, unlike meat from the an older goat যেତେବେଳେ ଆମେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନା ସେଟା କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ପୁରା ଗାଢ ତାର dark color ଥାଏ and it is red in color, and ଯଦି red ହେଇ ଯାଇଛି ନା ସେ color red ହେଇଛି because of the deposit of extra fat, excess fat se body रे ତାର ହେଇ ଯାଇଛି. ତ ସେଇଥି ପାଇଁ ସେଇ ଭଳିଆ ମାନେ mutton को ଯେତେ दूर संभव आपण अवॉइड करिवे, and the farmer cooks faster than that the later, although the latter has more flavor. Okay, and while we are choosing means selection of beef जेतबेला आसुची सेतबेला हम देखिबा meat from the mature cow or buffalo is called the beef, and that from a young animal is called the veal, and the beef is darker in color than the veal, which is more on the pinkish side, and veal cooks very easily as compared to the beef, and it is also milder in flavor. If I will जेतबेला हमें pork को किनुचंती pork रे मध्ये देखि pork रे देखंतु pork किनला बेलो देखिबे because it contains the pork means कौन, this is the meat from the pig रो मांस को ही हमें pork बोली कहिताउ, and being a high fat आ देखंतु जेति की fat content आपण जेति की animal sources to protein पाउचंती सबुतर बेसी fat पाइबे आपण कर ए pig रो. Being a high fat meat, it is also more popular in some of the northern parts of the country, and ए सेई जो pork हमें नियंती इट्स माने एते भलो नुह because it causes the so many type of disorder, because there is a special risk of infection by the tinea solium and tapeworm, then that gets into the flesh of pigs living in the unhygienic condition. तो सेइति पई जो मानकर भी जीआई ट्रैक्ट रो कोनसी प्रकार माने प्रॉब्लम रहतो से माने स्पेसिफिकली पोर्क वाला मीट को अवॉइड करबा निहाती दरकार. And poultry, the example of poultry is the chicken, dog, geese and turkey, and poultry is generally meat chicken. Okay,
And it is also when buying the chicken we need to refrain from buyer larger bigs because they are older, and the meat is also very good. Mainly, in fact, it is big big that big poultry is very economically to buy large broiler because the wastage in terms of the bones on a weight basis is less in general. But while buying the chicken, ensure that the skin of the chicken is soft and that tear easily. And while we are buying of the fish, at that time the fish is in a excellent sources of what protein, and it also provides the good amount of phosphorus, iron, and also calcium is also there. Fish also supplies the vitamin A along with the B complex vitamins. Particularly, fish is enriched with the niacin vitamin. Okay, and they are nutritionally very rich, and their flesh is easy to cook and digest. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିସ୍ କୁ କିଣୁଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ କରିବା ବି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବି କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ନେଇକି, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫିସ୍ तो आम निहाती रूपे 1 kg या लेस देन 1 kg पहला फिश किनिबा। एंड जेतेबेले आम फिश को रेकमेंड करछंती काहा को खाइबा पाए, तो जदि घरे कौन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन्स अछंती या जो माने पाठ पाठ पढ़ी के कौन कंपटीशन पे कॉम्पिटिटिव पे प्रिपेयर होचंती, सेमान को हम सब बेले हेड पार्ट एंड टेल पार्ट दवा पे ट्राई करबा। एंड मिडिल पार्ट सब बेले हम अदर जो माने डिसऑर्डर वाला कौन से डिजीज पर्सन अछि तांको दबा। एंड स्पेसिफिकली जेते कम वेट वाला हम फिश किनिबा सेति के हम हेल्थ में सेति बेनिफिशियल। एंड जिते बेले कौन सी पेशेंट पे जिते बेले फर्स्ट क्लास प्रोटीन कथा चिंता करछन, एवं जिते बेले कौन सी प्रकार कार्डियोलॉजिकल इश्यू को नेकी जिते बेले हम कंसीडर करछन, तो से समय हम निहाती रूपे स्मॉल फिश को अधिक एम्फसाइज देबा। बिकॉज़ जिते हम स्मॉल फिश नउछंती तो होल फिश वी आर कंज्यूम्ड, एंड सेइथरे अधिक मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन आपण माने पाई पारिबे। एंड आपण जिते बेले फिश भी नउछंती, फिश एंड शेलफिश जिते बेले हम माने किणुछंती, से समय आपण तार कलर को देखिबे, स्पेसिफिकली केते से सॉफ्ट, जदि ओवर सॉफ्ट हो जाय स्किन ताले से वाला फिश को आपण माने सब बेले डिस्कार्ड करिवे। ए फिश ऑफ द गुड क्वालिटी ना, द कलर एंड द स्किन आर ब्राइट एंड द स्केल्स adhere well to the body, and the eyes are also very clear and unsunken, and the gills are red like the fresh blood। किंतु आपण मन देखिथिबे जेतेबेले नष्ट हो जाय था ता ग्रिल गुडा को पूरा ब्राउनिश से कि डार्क ब्राउनी कलर हेतिबो। एंड जेतेबेले आपण इवन कटिंग करबा समय रे मते जानि परिबे चार फ्रेश ब्लड आसुतबो, जोतरे काटिला मात्र के ज्यादा ब्लड माने बाहर उठबो, तो दैट इज द फ्रेश फिश आपण माने कंसीडर करि परिबे। एंड जोटा खराब थाए ना, जोटा स्टेल और द स्पॉइल्ड फिश, द स्किन इज डल, स्लिमी एंड पेल इन कलर, एंड द स्केल्स आर द वेरी लूज also, and the eyes gray and dull also, the grills are dark and pale, and the flesh flabby and soft also। usually when the placed जदि हम से वाला फिश को हम नउचंती, when placed in the water the fish will float। कोटा जोटा खराब फिश, unless you have facilities to freeze food, fish should be brought on the day you plan to use it। Okay, and if the next one is your eggs। Eggs should be purchased very fresh and if possible kept in the refrigerator। If 2 or 3 days at a time during the winter, you can consume that one, and a day in time during the summer season। Eggs should be washed very well before storage and use, and one on the way not to tell a stale and the spoiled egg from a good one is to float them in a basin of water। The good one will be settled down firmly at the bottom, while the spoiled or the stale one will be either float to the surface or the stand or end in the water also। This is all about your egg।
Then selection of the nuts is also very important. And in the nuts, there are in India, the almonds, cashew nuts, coconuts, and groundnuts, pistachio nuts, walnuts, and all these are the example of good nuts. And specifically, nuts are similar to the dried beans and the peas in the nutritive value. Specifically, the protein content of the nuts varies from the approximately 7% in the dry coconut to 15% in the walnut, and specifically 19% in pistachio, and 21% in the cashew nuts, and 26% in the groundnut. And specifically, the 50% of fat with fresh coconut and the groundnut containing 40%, and dry coconut 62%, and walnuts contain the 64%. And so while buying the nuts, it is very important to see that the eyes are not spoils. Any changes in the small or tasty will mean that there are stale. And the appearance of the nuts is also very important. Civil nuts are not to be avoided. This is all about the selection of the nuts and the what? Meat, egg, poultry. Now I will discuss about the food selection. How we select the food. First one is the selection of the vegetables, that is the selection of the protective and regulatory foods. In the last class, I already discussed about the how we will select the bodybuilding groups of foods, and how we will select the protein, and how we will select the energy giving foods. In the energy giving foods, I already discussed about the carb, different types of carbs, that the simple carbs and the complex carbs. And the example of the simple and the complex carb, I already discussed about the different types of proteins, how we will select the different sources of proteins. And I already discussed about different types of fats is available in the market, and which fat is good for our health. And today I will discuss about the selection of the protective and the regulatory foods, and the selection of the different types of vegetables, selection of the different types of fruits also, and the selection of the food accessory, selection of the beverage also. Selection of the vegetables is very important, because foods included under the term vegetables are the plants or those parts of the plants that are used for human food. And specifically, however, the problem with this definition in that fruits and seeds, especially used as the cereals, are also the part of the plants, and yet most of these are not classified as the vegetables, fruits, cereals, or cereals and nuts, since they are all part of the plants, but their role in our diet are different. Specifically, the vegetables are rich source of carotene and vitamin C. They also provide the high proportion of cellulose. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଧିକା ଥିବ ଏବଂ କେରୋଟିନ୍ ଅଧିକା ଥିବ, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ହାଇ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ସେଲୁଲୋଜ. ସେଲୁଲୋଜ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି ମୁଁ? ସେଲୁଲୋଜ ମାନେ କ'ଣ? What is the role of cellulose in our body? Cellulose कौन? लक्ष्मी प्रिया साहू मैम कहतु कही लास्ट क्लास रे, लास्ट क्लास नहीं प्रीवियस क्लास रे मैं डिस्कशन करथली. स्वरूप बाबू कहतु. Cellulose कौन? Very simple जिनस, and cellulose is very vital for our body. मैं कही what is the function of cellulose for our body? Cellulose is a material, madam. हाँ मैडम सुगर का ब्रेकडाउन हो जो साइलेंट एमती रहउछन्ती, मते लागुची आपण माने क्लास को माने किछि गेन करू नाहंती बोली. फाइबर मैडम सुगर का ब्रेकडाउन हैला पर सेटा सेलुलोज सेटा एते समय पर समस्त एकाथरे बाहरुचन्ती, बट आगुर एते थरो पचर आपण जेमती माने मो क्लास करिनी हम किछि कहिनी सेमती पूरा रहउचन्ती पूरा. सेलुलोज इज नथिंग. मो बहुत रे डिस्कशन करछि. सेलुलोज होछि आपनकर फाइबर. आज्ञा फाइबर तो फाइबर हम शरीर ପାଇଁ तो बहुत सारा आवश्यक ना ना नहीं. आज्ञा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइबर इन आवर बॉडी? it helps in the digestion. Only it helps for the digestion. Hydration of body. Very good. And it also acts as the
anti-carcinogenic effect, and it is also very good for the GI system. It's also strengthening our circulatory system, nervous system, and it also regulate our lifestyle disorder. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Vegetables are rich sources of the carotene and the vitamin C. They also provide the high proportion of cellulose. Cellulose is nothing. Cellulose is the fiber to the diet and help alleviate the constipation. And specifically, the vegetables are mainly categorized into two types. One is the greeny leafy vegetables, and other one is the other vegetables. In the greeny leafy vegetables, mainly it includes the spinach, amanat, fenugreek leaves, coriander leaves, mint, cabbage, and the mustard leaves. And commonly these greeny leafy vegetables with their nutrient, it's very good for our health. And specifically these greeny leafy vegetables are very crispy, tasty, and colorful, and mainly it is useful for the use as the very good sources of the vitamins, minerals, and minerals. It mainly these greeny leafy vegetables that contains the richest sources of vitamin C is there, and vitamin A is also there. Greeny leafy vegetable as compared to the other vegetable like citrus fruits, especially those with the vegetables that can be eaten uncooked, like the आपण माने मु काली भी कहइतली जेंति मेथी हो किबा कोरिएंडर लीव्स हो किबा केबेज हो एडा को हमें निहाती रूपे कंचा फॉर्म रे नबा निहाती दरकार, because it anti carcinogenic effect है. And so also this greeny leafy vegetables contains the richest sources of vitamin C is also there. And these leafy vegetables as the classes are not particularly valuable as a source of thiamine and niacin also there, but also source of riboflavin. And these quite high in the greeny leafy vegetables are of the particular value in the situation. And specifically these greeny leafy vegetable also makes a very significant contribution in the terms of the minerals also. As a rules, they are a valuable source of both iron and the calcium. These greeny leafy vegetables, the outer leaves of the lichu and the cabbage are usually higher in the calcium and iron than that of the white inside leaves. Jani hela? Jani na jannathile eta? जानिथिले समस्ते आउटर कवरिंग ही आपनकर लिचुर आउ आपनकर जो केबेज रहिछि सेतिर आपनकर रिच सोर्सेस ऑफ आयरन एंड कैल्शियम इज देयर भीतर एते न थाए ऊपर कवरिंग रे हमें कोन करंती जेतल मार्केट रो किनि के आनते 4 5 10 खंड पत्र आगे छिंडे की बाहर को ऊपर ऊपर फोपाडी दियंती किंतु हमें जानि न थांती सेतिर आपनकर रिच सोर्सेस ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इज देयर जानि हला तो हमें एबे डिस्कार्ड करते नबा नबा बट तको हम एमती डायरेक्टली न नै कि प्रथमे हाफ एन आवर या 45 मिनिट्स तक पानी रे सोक करके रखिबा. And other vegetables, in other vegetables like the brinjals, tomato, lady's fingers, and beans, different varieties of gourds like butter gourds and snake gourds, rich gourd, and bitter gourds, carrots, cucumber are the some of the common other vegetables. Selection of vegetables is very important. While selection of the beans, there are many variety of beans is available in the market. Specifically, there the color and the shape of the beans is very important. This should be young, tender, and a good even color also. They should snap when broken, and pods should be stateless and straight, not twisted, rusty, or spotty. आमे जे देखिथिबे केते सारा चित्र विचित्र रंग बेरंग हेतिबे से प्रकार बीन्स को आमे बिल्कुल किनिबा नाही मार्केट रो. And while purchasing the capsicum रे मध्ये आपण देखिबे regardless of the tile variety, capsicum should be tender and thin with fleshy wash. They should be well formed with a clear rosy dark green color. While choosing the cauliflower the heads should be compact. आपण जे छाड़ी 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 की जो थिबो जो माने जना पड़ी जाए माने कोटा बेटर काउलीफ्लावर, बिकॉज जोटा पूरा आपण को लंप फॉर्मेशन है कि माने गोटे 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 बंधी माने बांधी बांधी का जोटा थाए, दैट इज द वेरी गुड वन. एंड व्हाइट इन कलर and free from the soft and the wet decay. This is about your cauliflower. While purchasing the cucumber should be fresh, smooth, firm, and well formed in the green color also. And soft spongy ones are not desirable. A yellow or the rust color in the skin of the cucumber is a sign of over ripeness. It is also not good for your health. While purchasing the gourds, different types of gourds is there, like the snake gourd or different types of this gourd is also there. Butter gourd is there. Butter gourd is otherwise called as the loki or dudhi boli madhya odia re kuha jaye. And the round gourd hochi apanakara tinda jota.
fresh and tender variety are firm and green, and you should be able to dig your nail into the skin with easily. सेटा होची आपनकर भलो फॉर्म रे थाई सेटा नखो आपन पसेबे जाई पारुथुबो सेई टाइप रो देखि कि आपन चूज करके किनिबे. And the selection of fruits is very important, because while choosing the fruits ना हमें जो प्रकार फ्रूट्स आनिबा भी सेई प्रकार फ्रूट्स को कंज्यूम करबा एवं सेई बडी आपण जो आगुरु जो पढेली म आपण माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कंटामिनेशन विषय पढौतली सेई प्रकार इन्फेक्शन होबार चांस अछि. दैट्स व्हाई while choosing the fruits that's very vital. Banana during the जेतला हम banana किनुचंती, banana should be just ripe and yellow in color. It should not be overripe with too many dark spots or dark brown skin, or underripe with the greenish skin and hard and pronounced ridged. Okay, এটা হচ্ছে আপনাদের banana. Then next one is your যেতବେଳେ আমি ऑरेंज को हमें परचेस करछंती तो ऑरेंज किला बेले सब बेले आपण देखिबे दे शुड बी फर्म एंड हेवी विथ नो सॉफ्ट और मोल्डेड स्पॉट. फर्स्ट थिंग है किछि मोल्ड अछि कि ना सेटा को आपण फर्स्ट एनालाइज करबे. एंड द थिनर द जेतबेले हम स्किन कथा में चिंता करिवे द थिनर द स्किन ऑफ द टाइट स्किन ऑरेंज द बेटर द क्वालिटी. And while purchasing the lime na first upon lime for the yellow lime with a thin and shiny skin tiba nihati darkar, and they are also more juicy than the ones within the thick skin. Bujhiyala. And specifically quite often the larger looking ones have the thick skin and are less juicy, and the thin skin one are also called the kagaz lembu, jota ki north re ame bibhinna prakara amne use करथांते. While purchasing the custard apple ना custard apple भी बहुत भलो जिनस, but जितोला हमें किनु चंती there must be a film but pliable to the touch with a yellowish green skin with a surface between the eyes white in color, and there should be no brown discoloration on the outside, and the skin must not be brittle and hard. And while purchasing the pineapple na pineapple jetola me no chanti plump square fruits are better to buy than those that are long and tapering, and there should be no mold at the base. Pineapple mainly picked too green are not good. Okay. While purchasing the papaya na papaya is a richest sources of carotene is there, and unripe papaya is the richest sources of enzyme like the papain. से पहले मैं आपण मानन को कहा जाए जो माने को जदी कोनसी प्रकार एपीडी प्रॉब्लम रहउची, पेप्टिक अल्सर अछि, गैस्ट्रिक अल्सर अछि, ड्यूडेनल अल्सर अछि, किंबा कोनसी प्रकार जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर रहिची से मानन को निहाती रूपे जो मानन को फ्लक्चुएंस रहउची, एसिडिटी रहउची, से माने निहाती रूपे रॉ पपाया खाइबा दरकार. इवन जो मानकर पीरियोडिक इश्यू रहउची, पीरियड इन टाइम रे होनी 2 मास रे 3 मास रे एंती होउची, तो से मानन को मध्ये रॉ पपाया जति दबा ताल से मानन को पीरियड साइकिल मध्ये धीरे धीरे नॉर्मल हबा आरंभ करबो, because it contains the papain. आसी अपन को हार्मोन को रेगुलेट करिवारे मध्ये हेल्प करबो. एंड पपाया होची गोटे बहुत भलो जिंस जोटे कि राइप रे भी हम नै परिबो, अनराइप रे मध्ये नै परिबो. And that unripe papaya is rich sources of enzyme the papain which digests the proteins, and it also to soften meals and dals in cooking. जेतबेले आपण देखिथिबे सेतमे गां गळे रे लोक माने जो मानकर प्रेशर कुकर वगैरह नथिबा से माने कोन करंती जेतबेले मटन फटन एंती रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन जति किछि रोसे करूछंती सेते आपण देखिबे ए पपाइन को आनि कि पकई दियंती कंचा अमृतभंडा भाबो माने से माने भाबंती जे कंचा अमृतभंडा रे खीरोटा पडी गेले से जिंसरा सिजिबो. नॉट लाइक दैट. कंचा अमृतभंडा को आनि कि जति आपण काटि कि सेते दि चारटा खंड पकई देबे ताले सेही मटन टा बहुत इजीली सिजिबारे मध्ये हेल्प. नॉट ओनली इन द मटन, एनी प्रोटीन रो जति किछि भी जिंस जेंति मटर बेले बेले देखिते मटर तरकारी करथिबे मटरटा पर टाण टाण कि हाड़ हाड़ होई कि तो मटर तरकारी तो हम बनौछंती टिके सेमी सॉलिड हेतिले ताको खाया पे टेस्टी हबो एंड इजी फॉर द डाइजेशन आल्सो. दैट्स जति से न बिसुची आपण ए थ्रू जति टिके ऐड करछु सेटा मते आपण को इजी करिवो फॉर द कोन सिझिबा पय. And a ready to eat papaya should be firm and turning yellow in color. This is all about your selection of the fruits. And the next one is the selection of food, the food accessories. What do you mean by food accessories? फूड एक्सेसरीज कहले हम कोन बुझिबा? खाद्य हमें रोसे कहले खाली कोन फ्रूट्स वेजिटेबल दैट भात डाली सॉरी चाउल गहम सुजी मैम मसला दरकार हुए. वेरी गुड. मैम मसला वेरी गुड. दरकार हुए.
सेही सब होची आपनकर कोन यूजेबल जिंस एंड सेही होची आपनकर एक्सेसरीज spices जेतले नौचंती spices and condiments applies to such a natural plants or vegetables product or mixture in whole or the ground form are used for the impact in the flavor aroma and for the seasoning of the food also. It is also very good effect also. And spices import distinctive flavor to the foods because they contains the volatile materials known as the essential oils. आपण देखिथिबे जेतेबेले मसला फसला बाटुचंती एक करथिन हातटा तेलिया तेलिया मध्ये होई जाय थाय because it contains the essential oil and which gives them their characteristic flavor and odor which appeals to the sense of the smell and taste and make the food more palatable. Okay. And herb also like the greeny leafy vegetables mint and coriander are also very rich in the carotene and calcium and vitamin C is also there. Unlike the other herbs, these two herbs specifically you use the coriander leaves and the mint leaves. This used in the fairly, but it is very good for the health. Their contribution of the carotene, vitamin C, and calcium our diet can be quite substantial, and it's a very good sources of vitamin C is also there. Okay, and salt is also the accessory. सॉल्ट जदि आम ननबा ताले आपनको डाइट रे कोन हबो आयोडीन रो डेफिसिटी हबो आयोडीन रो डेफिसिटी हे कि बॉडी रे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हबो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ले अगेन आपनको बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन बाहरिबो सेठी हमरो सॉल्ट मध्ये प्ले करे गोटे बड़ रोल इन आवर ड्यूरिंग आवर डाइट प्रिपरेशन. एंड विनेगर कोन सावर वाइन बोलिया को कहंती बुझी पाले. And that vinegar is essentially a solution of the 4 to 5% of acetic acid in 100 parts of water. A synthetic vinegar is just this plus a little burnt sugar. बुझी पाले जोटा कि caramel to give its color and barley malt to give its flavor. And this is what we buy in the market of bottle of this vinegar. Na? The real vinegar is made by fermenting sugar into alcohol. And further fermenting alcohol into acetic acid to convert करा जाए आ सेटा होची आपण मानकर कोन विनेगर. And malt vinegar is made from the germinated barley. मुझे बार्ली कथा काली कहउतली एको germination process से आपनकर विनेगर तैयार हुए. And waste from the canning of the fruits like the pineapple, orange, grapes, tapioca, coconut and sugarcane and juices like the molasses, jaggery, palm, toddy all are used to make the vinegar also. And excuse me ma'am. हाँ कोंतु मैम गोटे एप्पल विनेगर साइड अच्छे सेटा कोन माने से विनेगर टा कोन एप्पल हाँ सेटा से एप्पल रो हिंती आसीता एप्पल रो रस को एक्सट्रैक्ट करके से माने बनै थांती. एंड दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ स्पेसिफिकली जो माने कर कोन से प्रकार कार्डियोलॉजिकल इश्यूज रोची ना दैट एप्पल साइडर विनेगर इज वेरी गुड फॉर देम. ओके जो थिरु आसीबो थैंक यू मैम. हां ता जो थिरु आसीबो माने जोटा हम हेल्थ पे बेनिफिशियरी थिबो सेही जिंसटा को हम आराम से फूड रे नै पर मैडम ताको केमती खाइबो केमती माने व्यवहार केमती कोन करबो ताको कोन से एप्पल साइड विनेगर ता एप्पल साइडर विनेगर ता आपण नकुसुम पानी रे टिके पके कि एमती 2 ml 3 ml पके कि माने आपण डेली बेसिस रे आरंभ करि परिबे किबा कोन से जिंस रे ताको ऐड करके अजे जेमती फ्लेवर बोलिया कि किछ गोटे जेमती हम भात खाउछन ता ऊपर टिके घी पके दोछंती एक्जेक्टली कोन गोटे स्नैक्स नेला को सेतरे भी आपण नै परबे एनी फॉर्म रे से हम बॉडी को जिबा दरकार. अच्छा. Then next one is the tamarind. Tamarind. सेटा कोन सेटा भलो ना मंद शरीर पय तेतुली बहुत बढ़िया ना मैम बहुत बढ़िया. मैंने गुपचुप रे दरकार हुए वैसे नहीं नहीं मु सेटा पचरुनी हम शरीर पय से केते भलो या मंद बेसी भलो बेसी भलो नु कोन पे बेसी भलो नु खट्टा जिनसटा मैडम खट्टाटा कोन शरीर पय दरकार नै त लेंबुटा भी हम शरीर पय भल नै अमलाटा भी भल नै आमलाटा हमर कमलाटा भी भल नै लेंबू कागजी सेटा मैडम विटामिन सी अलगा न्यूट्रिएंट अछि इथरे खाली खट्टाटा एटी न्यूट्रिएंट सेटा स्टोरेज है कि बहुत दिन पर्यंत रुहे. अच्छा आपण ओटे काम करिवे आज जाय के टिके पढिबे आरो थेरापेटिक यूजेस कोन कोन. ओके
तापर आपण कहबे मैडम कोन बेनिफिट कोती एबे आरंभ करिबे बोधे जरा सारु सारु गोटे क्लास रे पढै छिबो मोर तो मु कहबा पई चाहुनी बट इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ बुझियला तो निहाती रूपे आपको भी किछि किछि डाइट शामिल करबा निहाती दरकार एंड इट्स वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ and this flavoring extract like the lemon रो orange रो vanilla beans रो ए सब रो मध्ये जो हमें extract करी जेंति किछि गोटे जिंस बनौछन सेतरे लेमन किछि स्क्वीज करतु जेन सेटा मध्ये हम शरीर पय निहाती भलो and that coloring materials सेति कि हमें न यूज करबा सेति कि हम पय हम हेल्थ पय सेति कि बेनिफिशियरी ओके now I will discuss about the selection of the beverages बेवरेज कौन कौन कहि परिबे कि बेवरेज टी माने कॉफी कॉफी टी मैम कॉफी टी एंड कॉफी जूसेस ओनली टी कॉफी होची बेवरेज जाउ किछि नै हमर कोल्ड ड्रिंक्स टी कॉफी अल्कोहल वेरी गुड जोटा भी आपण माने सॉफ्ट ड्रिंक्स कोंतु कोल्ड ड्रिंक्स कोंतु कि हॉट ड्रिंक्स कोंतु आज्ञा बुझिला तीनटा ड्रिंक्स अछि ना सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स एंड हॉट ड्रिंक्स हां तो से सब तक ड्रिंक्स यस मैम आपण का बेवरेजेस रे जीवो जोटा कि हमें माने पानी फॉर्म रे हमें पानी रो अदर फॉर्म रे हमें नउचंती बॉडी को से सब होची आपनकर बेवरेजेस हैला फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द टी टी तो आपण माने जानि चंती द टू इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टी आर द फ्लेवर एंड द बॉडी मेनली द बॉडी इन्वॉल्व द स्ट्रेंथ एंड द कलर ऑफ द ब्रू जोत्री कि आपनकर decoction थाए these two characteristics generally do not exist together in mainly to tea mainly contains the two important constituent of the tea that is tannins and caffeine both of these dissolve out into the tea decoction and tannins are mainly responsible for the astringent feeling in the mouth and when you are sip strong Indian tea without milk or Chinese green tea. Caffeine is also responsible for the bitter taste of the strong black tea. The tea is due to the volatile aromatic constituent and that are partly present in the leaf and partly arising during the fermentation. Okay. And coffee. मैम सुनिबारे प्रॉब्लम होची मैडम मैडम आपन वॉइस टिके सुबह जाउनी डिस्टरबेंस होची मैम आपण माने लक्ष्मी प्रिया मैडम एंड मु गोटे जिनस कहबी प्लीज आपण माने क्लास रे थिला टिके तो अलर्ट रहंतु बिकॉज़ आमे माने जहा भी करूछंती ना अदर माने बहुत समस्तन पई मैं जानुची समस्त निहाती रूपे जॉब होल्डर किए ना किछि काम ही करूछंती आपण एई 2 घंटा सेई भितरो शेड्यूल भितरो बाहर करी कि क्लास करबा इट्स नॉट टू इजी तो अन्य माने हमें ट्राई करू जदी हमें किछि काम रहउची या किछि प्रॉब्लम होउची हमें माने क्लास को ये करियो बट अन्य माने को हमें टिके माने डिस्टर्ब करिया पे चेष्टा करिबा नाही ओके कौन कहउचंती राइट मैम ओके मैम राइट हाँ तो टी कॉफी एवडा होची आपनकर बेवरेज एंड कॉफी होची कॉफी सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरब वर्ड कहवा and which is generally referred to as the wine and only later to the coffee decoction and it coffee रे मध्ये बहुत सारा भलो जिंस रहिछि जेंति जोटा कि हम बॉडी पय निहाती रूपे दरकार बुझिला तो कॉफी केबे केबे में नहीं पारे बट सब केस रे मध्ये कॉफी को हमें नबा नहीं it also causes so many complication and selection of tea coffee is very important select according to your preference try means a whole leafy variety if you want a light cup of tea full of fragrances and flavor on the other hand for a strong cup of tea select a granular tea and always while buy tea or coffee which is sealed and packed in airtight containers very good and avoiding buying loose from the market and also preferable buy unroasted coffee beans and roast it yourself before grinding you use it
This is all about your beverages. Then brand ଯେତେବେଳେ ଆମେ yes ଯେକୌଣସି ma'am. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କିଣୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କୁ what is brand is a trade name under which a particular item of the food is sold. Okay, that is the brand. And label food labeling ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ important. And labels ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମେଡିକେସନ କିଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋ ବ୍ରାଣ୍ଡ ର এটা mankind ର ନା এটা ଆଉ କୋଉଥିର similarly labels को ମଧ୍ୟ labels should give your information you need about the product you are thinking of buying before କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି a good label should have on it the grade of the product and the stamp or the mark of the authority that has graded it. And next topic is our food storage. It's very important. Food storage. First one is the food spoilage and the cause of the food spoilage, factors affecting the food spoilage, and the method of the food storage, organism storage spaces. These all are the very important topic. What is food storage? Food storage के लिए हमें कौन बुझीबा? Not to store the foods for a period of time. केमिति हमें ताको स्टोर करिबा एंड दैट स्टोरेज तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट माने हमें फ्रूट्स आइटम को हमें स्टोरेज करछंती जेमति कि पेरिसेबल फूड हो नॉन पेरिसेबल फूड हो किबा सेमी पेरिसेबल फूड हो बुझिला तो ए सबुर स्टोरेज रो मुख्य कारण होछि फूड स्पॉइलेज को हमें केमति प्रिवेंट करिबा ना कोन Yes ma'am. Yes ma'am. Mainly food spoilage, the quality of the food item is measured in terms of its sensory properties, like the properties that can be detected by our sense of sight, smells, touch, and the taste. There are the appearance, texture, flavor, and aroma. In addition to these, three other important quality factors which cannot be judged by our sense alone are nutritional value, जोटा कि हमें देखी पारंती, safety and shelf life also. Any adverse changes in the food quality as defined may be considered the food spoilage, and food spoilage is otherwise called as the deterioration. What is the cause of the food spoilage? Mainly the food spoilage is occurred due to the microorganism and the natural enzyme also. Insect and other rodent also play a major role for the food spoilage. What is microorganism? The tiny microorganisms like that is bacteria, virus, fungus. What is that that? helps in destroying the food items, spoiling the food. That may be bacteria, virus or fungus. ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ସେଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହଁ କଣ ଖାଲି ଆମର ଯୋଉଟା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନେ ହିଁ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଇନସେକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଇନସେକ୍ଟସ୍ ଖାଦ୍ୟଟା ରହିଗଲେ କଣ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ରହିଗଲେ ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ୍ରିଏଟ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇପାରେ ଆଉ ବୋନଲେସ୍ microorganism are the very microorganism is nothing microorganism of the food are normally mainly contaminated with the microorganism only. They are present everywhere in the soil re bhi thai pare air re bhi thai pare water re bhi thai pare skin of the kettles and the feathers of the poultry and within the intestine and all the other cavities of the animal body also this microorganism is present. And microorganism, it includes mainly, it may be bacteria, it may be yeast, it may be molds, it may be means algae, protozoa, and other. Among these bacteria, molds and yeast are the major cause of food spoilage. As in class, I discussion because
They feed on the food in which they live and cause the variety of changes in it. Most of them are very harmful because it produces the changes which leads to spoilage of the food. And this, however, some of the microorganisms are desirable effect on the food, like the cause we cultivate bacteria called the lactobacillus, which gives cause its distinctive flavor, and vinegar is also the very good product of the bacterial action. এই সব জিনিসটা যেহেতু পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া ଆମ বডি ପାଇଁ মানে পজিটিভ ইম্পাক্ট পকাଏ जो आगुरु मते एबे जस्ट या पूर्व म आपण मानक कहउतिली या पूर्व मते लास्ट क्लास मानकर म ऑलरेडी डिस्कशन करिछि जदि आमे खाद्य रे जदि किछि कॉर्ड नउचंती या किछि विनेगर नउचंती कॉर्ड न पातरे एथरे पॉजिटिव बैक्टीरिया हमर डेवलप होछि जोटे कि आपण मानकर जीआई ट्रैक्ट रे जो अदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करिबार इट विल हेल्पफुल ओके दैट्स व्हाई ए सब जेंति कि आपण कर जदि विनेगर कथा बे आ पूर्व जने पचले मैडम जदि हम एप्पल साइडर विनेगर न बतल वेरी गुड फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर न कहली बिकॉज़ एथरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप करि थाए ना से हमर गट रो जो गुड माइक्रोल कंटेंट को बहुत बढ़े देता है इट्स वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्दी पाई एटा निहाती दरकार एंड बैक्टीरिया मेनली व्हाट डू मीन बाय बैक्टीरिया कौन सी भी गोटे प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुझी पाले एंड दिस लिटिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ द वेरियस शेप एंड साइज के तो शॉर्ट थाई पारे लॉन्ग थाई पारे स्लेंडर थाई पारे एंड हाउ एंड दिस बैक्टीरिया इज आल्सो मेनली डेवलप इन आवर meat, poultry, dairy and fish product. Bacteria do not thrive on the foods which are distinctly acidic or the alkaline in nature. They develop rapidly on the foods which are natural, neutral and in reactions such as vegetables, milk, egg and meat and the fish. And some of the bacteria is also destroyed by the boiling or by the direct exposure to the sunlight. Low temperature also affect their growth. Eta hochi bacteria, and bacteria is also one type of microorganism जोटा कि आपण मानकर बहुत सारा फूड पार्टिकल्स तो मते आपण माने पाई परिबे एंड ईस्ट कोन आपण ए सब जानि छथि कहंतु तो It is mostly found in मैं जेतरा बेकिंग करू छै ना से बेकिंग दिरे जोटा फुलेवा करे सेटा हला ईस्ट इट्स अ टाइप ऑफ फंगस एटा मते आउटे टाइप कोन कहली एटा आउटे प्रकार फंगस नो फंगस इज डिफरेंट थिंग्स फर्मेंट करिया पे यूज करा हुए वेरी गुड जो बेटर फिटर करी के हम 24 आवर्स 36 आवर्स जो रखी दियंती ना सेतरे जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ईस्ट यूज हुए and mainly this yeast represents the another category of the microorganism. Yeast mainly causes the food to fermentation. जदि yeast थिबा लागि गोटे जिंसटा फर्मेंटेड होची एंड फर्मेंटेड थिंग्स टाइ हम शरीर पई बहुत भलो as you know the fermentation by itself is not the all together and the undesirable process. It is often used in the preparing of the foods. Example त हम जतल ढोकला बनौचंती इडली बनौचंती या ब्रेड नौचंती and when this fermentation progress beyond a certain points it causes the food spoilage. किछि समय पर्यंत से तार लाइफ स्पैन था the extent to which the fermentation can harm the food is dependent upon the amounts of alcohol produced in that food, and more the alcohol produced, more is the extent of the spoilage. And the fruits, especially the cooked fruits juice which have only the small amount of sugar, fermented easily, and carbon dioxide bubbles rises to the surface when you shake the fruits na juice. So when you are orange juice or squash or the tomato sauce begins to produce the bubbles, you can spot spoilage due to the yeast formation. And this is all about your yeast, and this yeast is mainly used for the fermentation of the food. Okay, and the next one is the molds. Molds is nothing else. Molds are the very minute plants and that mainly grow in the all kinds of foods and the prefer the warm and damp and the dark places. एंड आपण माने जानि छथि गोट जिंस रो पक्के की रखि देला माने किछ दिन पर सेटा कळा हे कि पूरा ए जे सेटा होची आपनकर मोल्ड्स ओके आज तो बर्तन टाइम हे गला तो हमें एतिकिरे क्लास को ए करिबा आउ जदि किछि रहि जाउची ताले नेक्स्ट मु त आपण मानकर क्लास रहूची सेही भितरे देखि एडजस्ट करिया पय ट्राई करिबी मैम ए जो आपनकर एटा आउ जहा रहि गला हमें गोटे दिन गोटे लिंक ये करी कि मु नहले आपनक सहित गोटे क्लास ताको सेशन रे कंप्लीट करिया पय ट्राई करिबी ठीक अछि
मैम हमर वॉल्यूम 2 टा भी आपण नेबे क्लास हाँ वॉल्यूम 2 टा भी आपण मानकर नेबी एंड आउरी कोन कोन भी अछि सब नेबी वॉल्यूम 2 टा भी नेक्स्ट वीक रो स्टार्ट करबी एबे ए वीक टा को आउ जणे नेबे एंड नेक्स्ट वीक तो मु आपनकर आउ थे क्लास नेबी हला ओके मैम ओके सरीला यस मैम थैंक यू एते थैंक रहिबा you, ma'am. आउर कोन किछ Thank पचर you. कर अछि यू यस मैम कोन कहंतु अरुंधति मैम किछ कहबे नो नो मैम ओके थैंक यू मैम 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 जो हल्दी टा को हमें गोटा हल्दी नै कि गुंड करके ताको यूज करी हबो बहुत भलो बहुत भलो सेटा ओके हाँ एथर रखिबा आउ जदि कहार किछि डाउट थिबो हमें नेक्स्ट क्लास रे मत पुनी नेक्स्ट वीक रे आसुची आपन को क्लास रे से समय में डिस्कशन करिबा कोन कहउचंती आज्ञा मैम। थैंक यू ऑल थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम अच्छा सार माने किए ऐड करछन्ती ग्रुप रे टिके हमको ऐड करनांती आमे तक नाहु व्हाट्सएप ग्रुप रे सर केमती नंबर टा इथे दबु ना केमती दबु सर सर टिके रुहन मु टिके सर नंबर टा कहले 600 63700 63700 आउ थरे सर सर सुबुनी वॉइस टा ब्रेक 1093 सर मु कहूँ नंबर टा आउथरे सर मु कहूँ नंबर टा आउथरे कोन गोटे मिस हैला 63700 1093 सर टिके टाइप कर दो ना मेसेज करना टिपी नेबू समस्ते सेटा नुआ तो आमे टिके जानी पारनु अच्छा 63700 169 आगे 10